very often beauty is defined by society in a certain very rigid context, a particular size, particular color, particular what you wear, how you are. And most of us blindly try and adapt to that, forgetting that God has made us all differently. You know, you started your question saying हम लोग सब अलग हैं, बिल्कुल हम वो भूल जाते हैं, and we forget what is it that we should enjoy and be proud of in ourselves, and instead madly we all try and fit this one thing that we see on screen. I mean, imagine the world would be terribly boring if all women look like, I don't know, Deepika Padukone, and all men look like Ranveer Kapoor or whatever, you know. In fact, मैं अपनी किताब में कई बार कहती हूँ कि उसके बाद जब भी चर्चा होती है मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इन सम सेंस हम तवाइफों को फेमिनिस्ट कहते नहीं हैं, but they probably were. yeah absolutely Feminism is a मतलब my point is, do you want a funeral with 50 people or do you want to live your life and not give a damn कौन आए कि नहीं आए? My point is this. but हम lot of सोचने का people दाय want it अब right वो तो इंडिविजुअल है, बट मेरे हिसाब से like again it frees you up. I don't want 100 people at my funeral. नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं एकोलेस। एकता कुमार जी, एक इन्होंने किताब लिखी है बॉक्स ऑफ लाइज। किताब में जो कहानी है वो बहुत ही सस्पेंसफुल है, इसलिए मैं कहानी नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन उसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। और जो एकता कुमार जी ने जो लाइनें इस्तेमाल करी हैं इसमें, वो ऐसा लगता है जैसे किसी फेरी टेल है या किसी फिलोसफिकल वर्ल्ड की लाइनें हैं। जैसे उन्होंने एक लाइन लिखी है कि द वॉल बिटवीन टू वर्ल्ड्स इज वेरी थिन, स्पिरिट्स रोम। तो इस तरह की बहुत सारी आपको खूबसूरत जो डेफिनेशंस हैं या खूबसूरत जो काइंड ऑफ रोमांटिक हैं जो चीजें उन्होंने लिखी हैं। प्रेम जो है वो जैसे बहुत पहले एक कविता थी कि दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग जलता है, दीपक भी जलता है, शायद सरोजिनी नायडू ने लिखा था। तो ये जो ये प्रेम है उसको उन्होंने अलग अलग जगहों पे परिभाषित किया है, अलग अलग कैरेक्टर्स में परिभाषित किया है। एकता कुमार जी एक बहुत अच्छे परिवार से इनका पालन पोषण हुआ है। इन्होंने IIM कलकत्ता से अपनी MBA की डिग्री पूरी करी। फाइनेंस जो है और मार्केटिंग कुछ दिनों तक काम करने के बाद इन्हें लगा यार मेरा मन जो है इसमें नहीं लग रहा है, तो उन्होंने लिखना शुरू किया। टीवी एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, अलग अलग ओपिनियन पीसेस लिखती हैं ह्यूमन राइट्स पे। बहुत अलग अलग तरीके के एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। इनसे जब मैंने बात करना शुरू करा था तो मुझे एक अनुभूति हुई थी, बहुत एक्साइटेड था मैं, इसलिए एक दो बार मैंने बीच बीच में सवाल बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं। तो बहुत ही ओपन एंडेड कॉन्वर्सेशन है, आई एम श्योर आप लोग देखेंगे तो आपको मजा आएगा। अगर ऐसी बातचीत जो आपको ऐसा लगेगा जैसे दो मित्र बात कर रहे हैं, ना कि कोई इंटरव्यू ले रहा है और कोई इंटरव्यू दे रहा है। पॉडकास्ट की बजाय इट वाज मोर ऑफ जैसे कहते हैं ना, बातचीत है दो लोगों के बीच में। आप देखिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसी लगी। So what has been the most different conversation that you've had? with the people who come here. So why are you taking my role? Just to get to know where I am and what I am speaking with. I have spoken to people who have like a man who has done post-mortem of the bodies of Indira Gandhi to Arushi Talwar. Okay, so I've spoken to him. I think I saw that. bit. Yeah, and then I have spoken to historians. I've spoken to politicians. Recently, we are trying to get in touch with Asaduddin Owaisi to bring him to our channel, and He should be he's willing, yeah. sort of agreeing to it. Actually, what happens is that whenever I call these people, I tell them honestly. For example, to Mr. Owaisi, I said that I'm a hardcore Hinduwadi. Hmm. Why don't you come to my show and tell my people Hmm. that how can I trust you? Hmm. You know, that's what I told him. Hmm. We were speaking on phone. That's what I said. Why don't you come to our show Hmm. and tell our people कि नहीं इतना negative नहीं है वैसे जितना तुम्हें लगता है, because as far as I have read about you, you are the one person who goes to the library of He's well read. yeah, Yes. you're well read. You are one person who's usually seen in the library of the parliament. You're one person who has logical answers most of the time. So our people should know that. Right now, people are divided in such a bad way that
कि थोड़ा सा कुछ नेगेटिव सुना, अरे हो गया इसका, ये कुछ नहीं कर सकता. Hmm. That's what I was trying to tell him कि आपको आना ज़रूर चाहिए, because it doesn't matter कि चैनल का टेस्ट कैसा है, Hmm. because a lot of guests are deciding with the taste of the channel कि टेस्ट कैसा है, तो उस पर डिसाइड करते हैं वो. तो मेरा ये था कि मतलब उस पर मत डिसाइड करो, आप ये डिसाइड करो कि आप क्या कहना चाहते हो, because it's your show at the end of the day. My job is to just sit and ask you one question and it's your job to elaborate. It's just that what I do is I catch you on the either a lie or hypocrisy. That's what I do. So far I've been just trying my best to tell the world that, you know, how hypocritic everybody has become. Okay. And for example, on our channel there was a strike by YouTube because in one of the shows I told everybody that these gays and lesbians, the way they are trying to defend Hamas and Gaza, this is how they are treated inside Gaza. If you are gay or lesbian, they will throw you from the terrace, because as per the book, this is how you should be punished. So YouTube को बुरी लग गई वो बात, उन्होंने हमारे चैनल पे स्ट्राइक डाल दी उठा के कि मतलब कुछ भी बोल रहे हो यार तुम. So hypocrisy is something which we really want to tell the world that. But I mean, that you'll find that if you start looking, you'll see that everywhere. Yeah, absolutely. In every, even the cleanest of things, because the fact is ki, there is a face that you have for society and the world which cannot be absolutely genuine. It's incredibly hard to do that, one. And secondly, society would descend into chaos if everyone had their true face. We pretend and follow these unspoken societal rules. पहले आप कि थोड़ा सा कायदा बना रहे. Matlab, if it's only hypocrisy that you're gunning for, then you have a long battle, you'll be fighting everybody. That's true. So that brings me to a question. When I was reading about this book of yours, Box of Lies, I had a feeling that that women are enough for their lives. You don't need a man. I absolutely love this question. I absolutely love it. For the simple reason that that was not my intention at all. I love men. I'm surrounded by brothers and friends, and I've married a man, and I have 2 sons. And men are an integral part of my life. I absolutely love them. But I also love the fact that that is the first question. Because I think as women, we need a little bit of reminders, you know, that you're enough on your own as well. So, yeah. What about the hypocrisy of the fact that, you know, that, okay, I'm writing a book which is telling you that we don't need you. No, we need men. Okay, let me rephrase that. Please. I was so excited by the question, I forgot your exact words. Absolutely, we need men. There is absolutely no denying it. In fact, there are several, and I'm going to digress from the book a little bit. Please. I do work on gender on other platforms as well, and I keep saying this. In fact, recently I was at a forum where it was only women in the room, and I started with that, saying very often when we begin this conversation, it becomes us against them. It's not. We need them, we love them, we admire them, we are curious about them. They're the most interesting creatures on earth, but it should not become a dependency where you forget who you are. हम अपने आप को नहीं भूल सकते हैं, हम अपने आप को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं. So I think I'm trying to tread that balance, whether it's in the writing or it's in real life, to remind yourself that you're more than what a man thinks of you. To give you a small example, and this is just top of the mind. When I was growing up, I like to dress up, and even you wear lipstick or you wear heels, and very often, you know, especially because of the kind of work I was doing back then, you'd hear comments and you'd talk to each other and, about why you're dressing as a woman. And it was my mother back then who said, you know, you dress for yourself. You'd never dress for a man. You move away from the whole macro mating game, but still at the core of it, you dress for yourself. I'm not sure, it's a very basic kind of example, but that's what I really mean. We're doing the whole mating dance, but end of the day, that core has to be for yourself. That's true. But let me ask you another thing. So, every individual is different. You might be dressing up for yourself, and understandably.
But what about a girl who's actually dressing up to show off and she heard you कि ये बहुत अच्छा आंसर है. कोई पूछेगा कि क्यों कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो बिकॉज आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ. तो वहाँ पे आपको नहीं लगता थोड़ी हिपोक्रेसी आ जाती है ऑटोमेटिकली. इनसिक्योरिटी हम सब में है, अलग अलग चीज़ों के लिए. आई डोंट नॉट कमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर गर्ल. वी आर ऑल इंडिविजुअली फाइटिंग सो मेनी थिंग्स. एंड अगर हम ब्यूटी एंड लुक्स में अगर डिस्कशन करें, दिस इज गोइंग टू बी लाइक वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर, 7 hour conversation with nothing resolution inside, because it is something which is so it is something which is just to put it in a bad way, it's such a touchy topic because very often beauty is defined by society in a certain very rigid context. A particular size, particular color, particular what you wear, how you are. And most of us blindly try and adapt to that, forgetting that God has made us all differently. You know, you started your question saying हम लोग सब अलग हैं. बिल्कुल. हम वो भूल जाते हैं. And we forget what is it that we should enjoy and, you know, be proud of in ourselves. And instead, madly, we all try and fit this one thing that we see on screen. I mean, imagine the world would be terribly boring if all women look like, I don't know, Deepika Padukone, and all men look like Ranveer Kapoor or whatever, you know. Even the ideals of beauty become standardized. So I can't comment on individual insecurity. वो battle हमें खुद से जूझना है. वो लड़ाई हमें खुद करनी है. लेकिन So I'm standing on top of a terrace. Very simple example. I see चार छतों के दूर. There is a girl who is in red dress and I don't see her face. But immediately there is certain infatuation. Oh my God. it's the look at that. red. Yeah. It's not the girl. Yeah, or anything, right? But if it's a girl, it could be an auntie of 60 years of age. But since I could not see her, Aunties are very attractive as well. yeah, I'm totally taking offense to that. I'm in the auntie category. it could be. No, you're not. Anyway, so I see that the idea that, you know, when you say mention the names of Deepika Padukone and others and this and that, the chances are that the moment you speak to them, you spoke to them for 2 minutes, you're like, oh my God, no. So you are attracted to the idea of a Deepika Padukone, which is very pretty, but the moment you spoke to her for 2 minutes, and if you're slightly intelligent, you'll be like, nahi baba, nahi ho payega. Sushil, सबके अपने अपने I'm going to come back to that line you said, ना सब लोग अलग अलग होते हैं. किसी के लिए जो दिखाई दे वही काफ़ी है. किसी के लिए कोई चाहिए जो आपसे बातचीत कर सके. किसी को चाहिए जो बिल्कुल चुप रहे. I think most men would like that. Bad joke. Oh my God, you should delete that. My point is that ये feminist की problem होती है, वो ना सच बोलती रहती हैं बीच-बीच में. नहीं, don't say feminist. I don't know, that word has just such a negative connotation. It is. It's a Western concept. This whole thing of feminism is such a Western concept. In fact, मैं अपनी किताब में कई बार कहती हूँ कि उसके बाद जब भी चर्चा होती है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि in some sense हम तवाइफों को feminist कहते नहीं हैं. But they probably were. Yeah, absolutely. Feminism as a concept is, I don't know, we kind of imported it from the West, but it talks about something which is so basic that we both need a place, you know, to sit on the table and be equals. So, जो हम equality की बात करते हैं, let me give you some examples, right? When men get power, right, and they have been powerful from the beginning. Men are powerful. When men get power, they never become the way when women get power. You start from that lady, Egypt में कौन सी queen थी? Cleopatra. Cleopatra to Razia Sultan to Indira Gandhi to Margaret Thatcher to current CM of Bengal, Mamata Banerjee. When women get power, why they become so brutal and why do they become so like, for example, I sometimes think that had women been the powerful people, we would have seen nuclear wars. That's interesting you say that, because a lot of studies have shown actually most women in positions of power tend to be more empathetic. But it's interesting because your examples are women who've had political history. You've chosen, in fact, when you were
when you were telling me the names in my head, I was like, you're only choosing political leaders. There is No, a I'm power choosing play people who can have their finger on the nuclear bomb. button. Yeah, absolutely. I'm choosing them only. I would actually totally disagree with you. I Oh, think please as go a, ahead, convince me. but I need to convince you if we get a Mayawati, chance to have, Jayalalitha, if we get a anyone. chance to put our These finger on the button, representation for women is like barely 12%. not even There is that. no chance of us putting Not even our, that. not even that. Like So, that lady, तो मैं आपको convince क्यों करूं? German chancellor भी तो उसके पास nuclear bomb ही नहीं था. Yeah. She didn't have a nuclear bomb. Yeah. So But Merkel was the one who actually opened the gates to immigrants, right? My thing is, I think if you actually study history and statistics, most women in a position of power tend to use the power in a way that is less violent, if I had to put it that way, than men. So statistically speaking, but going ahead, I think you meant it more in terms of, or did you? I'm guessing you didn't really mean the nuclear button bit. You just no, I what I'm trying to say is that the moment a woman gets absolute power, like a chief minister or the prime minister, the women usually become brutal in their decision making. Women don't need to be the CM to be brutal. But most of the CMs. मैं पॉलिटिक्स से आप हट जाइए जी जी मैं जी कह जी रही हूँ जो पॉलिटिक्स में प्लेसेस ऑफ पावर की बात कर रहा हूँ तो पॉलिटिक्स इसीलिए आ रही है it starts from the house as well. Women can be absolutely brutal and सासुमा that is सासुमा again these are like stereotypes. I don't want to get into stereotypes. No, but I'm telling you upfront, right? Sasumas, they get it could be really... like a 17-year-old girl. In my book, in fact, that is one area I keep trying to explore, to say women are capable of being selfish, of being greedy, of being brutal. And these are not terms that you normally want to associate with women. Very often, more often than not. We'd like to see women in a more nurturing, caring, empathetic kind of role. या तो हम उनको देवी बना देते हैं या उनको माँ बना देते हैं. But it is important to see them also as human beings capable of brutality, of violence, of... I don't think that is... Again, I'm talking on an individual level, not on the basis of... I don't agree with your statement that all women in position of powers will press the button. That I don't agree with. But I like the idea of individual women, of exploring that facet of womanhood, of saying that... in my book as well, there are women who can react to things that happen to them, and even when you can't react, you find a way to get your way. I like that. I like that about women having agency, about... No, they do it. I agree. And it can be like an 88-year-old woman, and you look at an old woman, soft and, grey hair. So you were saying, instead of looking for the women in places of power, women are powerful and brutal everywhere. Common women. Okay. Bengal mein thi na, 150 years ago, there were these gang of women dacoits who were looting and killing, and I'm not getting into the morality of it, but as a concept, it's fascinating because it's just so... But why not morality? Why not morality? If a man is a dacoit and he can be fascinating, why not a woman dacoit who can be fascinating? Mostly men dacoits are not fascinating. They are. Like, look at watch movies. A lot of dacoits it's like... common. It's more common. For, when it comes to violence and men, you're not taken Poolan aback. Devi, for example. Much, again, आप बार-बार stereotypes पे जा रहे हैं. I'm moving away from stereotypes. But what I'm saying is, when it comes to a man, violence in some sense is not expected, but it is not very distinct from being a man. But you said that हमारी उम्मीद है मर्दों की कि लड़की अच्छी ही होगी, right? Most of the time. नहीं, we like vamps. मैंने कहा अच्छी बोली. हाँ, मतलब कि माँ ही होगी या बहन अच्छी होगी. Thank you then. हाँ, है ना? But we like vamps. Like, but the point is not whether you like or not. The point is to recognize that there are women like that. And without judgment, don't call them vamps is my point. Okay. Without judgment. We can be
we can have various But on the facets. judgment part, don't you think that we all judge people? That's how we have been made. Oh yeah, yes. From an evolution point of view, yes, Yeah. that's how we survive. Like, you meet Sunny, oh, he's a little dark, okay, eyes are good, hair is nice. I haven't met Sunny. Yeah, After the anybody. shoot, Yeah, lekin. anybody for the Yes, matter of it's like fact, we were right? talking before the shoot started rolling, right? And you actually use that phrase, saying मैं किसी को देखता हूँ, is it flight or fight? Uh-huh. That is an evolutionary sense, right? That's how we survive. We look and say, can we trust, or is he going to eat me for dinner? So yes, the point is, so which is why you can't fight judgment to that extent. But again, coming back to the conversation we were having back नहीं, then, why is not be the good judge यार? I mean, क्यों पीछे क्यों हटना? जो मेरे basic instincts हैं, मैं उससे पीछे क्यों हटूं? I'm not animalistic in my instincts. oh, we are. नहीं, we are, but I'm not. What I'm saying is that हाँ, भगवान ने मुझे जज करने के लिए बनाया है, तो मैं करूंगा जज. ऐसे कि जिसको जो सोचना है सोचे. I don't care. So I'll tell you, मेरे हिसाब से, there are 8 billion of us on this planet. When we were just a few thousands, we were given to our animal instincts. I don't like you, I will kill you and get out of here with blood on my hands and face or whatever. But when there are 8 billion of us, we cannot always give in to what we really feel. It is important we judge. It is the most natural human instinct, but we cannot be out there saying it and causing chaos, because society will descend into chaos if there's not a little bit of Don't you think order and society is already system. into chaos? मतलब कौन सा chaos? पिछले 2000 सालों से मैं सुन रहा हूँ. These are unprecedented times. I don't agree actually, because statistically these are the safest times. We have, if you look at purely numbers, number of deaths through violence and other means, this is one of the safest times. So again, सब कुछ देखने का नजरिया होता है, right? It's how we look at things and how you interpret data and how you look at the world. And sometimes Again, I I'm feel talking about the hypocrisy of this statement, which has been used by everybody when they talk to the people they are governing, or when they talk to normal people. They say these are unprecedented times. Most of the people, when you hear, if they want to galvanize people, they always say these are unprecedented. because our lifespan is give or take 100 years at max. So based on our experiences and what we experience, usme se our youth, or we barely have a few years. So we live in unprecedented times. I think it's such a strong, bold statement. It is meant to get attention. And again, but if you disassociate yourself and look at it from the 500 and 5,000 and 50,000 years perspective, ठीक है. Well, Prithvi is rolling and we roll with it, and nothing is unprecedented except the Big Bang and what we're going towards. ये तो वही वाली बात हो गई कि I was talking to somebody and we were discussing about something, right, philosophical and this and that, and then he says यार वो ना ऐसे हो रहा है, ये problem हो रही, वो problem हो रही, and then he said say something which makes me feel better. And I was like, in 100 years, we all will be dead and nothing will matter. You thought of that, and I looked at you, and you should have told him, you matter. You matter in this universe. You matter in my life. You matter. मैंने उसको बोला 100 साल में हम सब मर जाएंगे, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा किसी को. That's what I told, like, because he was a friend. Yes. So that's what I did, exactly my term. No, even if he's not a friend, that's a perspective. Yeah. So, which is the thing with philosophy, right? We can go on and on and on, and there can be so many perspectives. I'm just wondering, why do you have a cushion and I don't? Okay. Nah, I will not take This yours, one. but I don't know. नहीं कोई तू दूसरा लेके आओ. हाँ. I'm going to shift this a little I bit. hope you like this cushion because इसका जो ये वाला है, Stripes? I ordered these stripes. I got them made actually. Really? Because that's what I like, वो जो stripes होते हैं ना ऐसे straight, that makes me feel a little better. Because it's an order, because Yeah, it's yeah, perpendicular, yeah, because yeah. it's not chaotic. No, I didn't think about it. For example, English language, I haven't learned it because I have never been to good schools. So I have never learned English language. But I would know that somebody is speaking wrong English. I would not know गलत क्या बोल रहा है वो. But it will not sound good to my head. Something is speaking something, no, something stupid, something is going But on. आप कितनी पते की बात कर रहे हैं, because I studied in convent educated, I mean, missionary schools and all that, and English was my first language, and in school, घर पे नहीं, and you grow up reading English books, you grow up, and I grew up, a large part of my life was in the Northeast and Calcutta, and जब बड़े होने लगे,
अब मुझे लगता है ना कि मेरी हिंदी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स उर्दू तक लिखना उनको आता था, और वो भाषा मैं खोती जा रही हूँ। और आप अंग्रेज़ी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है मेरी हिंदी बेहतर होनी चाहिए। बट एंड आई हम थिंक व्हेन यू स्पीक इन हिंदी इट सीम्स कि उधार लेके बोल रहे हो आप. मतलब आप, आई थॉट आप कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, मैं मतलब मैं खुद कह रही हूँ, मुझे It बुरा लगता sounds है। cute. It sounds नहीं नहीं, क्यूट very की बात cute. नहीं है, हाँ मुझे हाँ हाँ एक्चुअली थोड़ी शर्मिंदगी होती है, क्योंकि और दिल्ली के आने के बाद तो बहुत ही, हम्म. क्योंकि यहाँ सब हिंदी नहीं बल्कि संस्कृत बोल रहे हैं। और और जैसा कि आपने कहा, ये मेरी मातृभाषा है, लेकिन मैं जूझ रही हूँ But थोड़ा सा। I don't think कि वही वाली बात है ना, गिल्ट का क्या करना. It's okay. I mean the way you're speaking Hindi, it's really good. You should continue इन the माई same. डिफेंस, जब मैं इतने साल बम्बई में थी, पुणे में थी, वहाँ क्योंकि वहाँ मराठी बोला जाता है, तो मेरी हिंदी वाज कंसिडर्ड बहुत ही अच्छी हिंदी बोल रही हैं आप तो। नहीं Marathi is, पर्सपेक्टिव इज I think पर्सपेक्टिव। Marathi is one of the best languages I have learned in my life. मजा आता है मराठी बोलने में. आपको याद है अभी? हाँ, मुझे तो लिखना पढ़ना बोलना, यादाश्त के मामले में बहुत अच्छा हूँ मैं. Really good in doing दैट that. इज स्कैरी एक्चुअली, पीपल विद गुड मेमोरी आर स्कैरी, क्योंकि वो भूलते नहीं हैं। So recently, I went to a person who's a philosopher and a psychiatrist. Huh, psychiatrist. So the lady was talking to my wife about me. So my wife tells her that he's cursed, and she's like, "What?" She says he's cursed of memory. That's his problem. Had he not remembered what he went through, he will be a different human being altogether. You know, इट्स सच अ ब्यूटीफुल थॉट। yeah, she's like, he's cursed by his knowledge, he's cursed by his memory. So, so I want him, let's work with him somewhere, so he can, because sometimes I get, it comes out, what you go through in your childhood, it just, over a period of time, it comes out of you. Even if, I don't know, आपने वो फिल्म देखी है फोन बूथ? बहुत साल पहले, मैंने बहुत फिल्में देखी हैं, तो मैं एग्जांपल वहीं से लेकिन देता मुझे हूँ. याद नहीं रहता। हाँ. आपको याद रहे? So in that movie Phone Booth, he says ki that this $2,000 watch of mine is a fake, and I wear this fake suit so I can remove Bronx out of me. जो Bronx का जो घटिया नेबरहुड है, तो वो चीज मेरे साथ कभी कभी अचानक से उभर के आती है कि वो जो 52 चाल वाला सुशील है, उसको पहले तो मैंने छुपाया जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने लगा, तो अब तो मैं उसको लेकर के बहुत ही प्राउड हूँ कि दैट्स हु आई एम. आई कैन नॉट चेंज. तो मैं यूपी बिहार की हूँ, और बचपन में एट दैट टाइम यूपी बिहार वाज सिनोनिमस विद क्राइम। आप मतलब जैसे ही मैं लोगों को बोलना स्टार्ट करती वो गुंडागर्दी और जो भी, और उस ज़माने में मुझे अजीब लगता था कि मतलब इसमें मैं कहाँ हूँ। और बट इट्स, आई थिंक इट्स अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। मुझे वही चीज़ अच्छी लगती है आज, कि मैं इस ऐसे जगह से हूँ जहाँ बहुत कुछ हमने देखा है। बिल्कुल. और जैसे जैसे उम्र हो रही है, आई थिंक इट्स अ फैक्टर ऑफ एज। आई थिंक जैसे जैसे उम्र होने लगती है तो समझ आता है कि वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक इंटरेस्टिंग सा पहलू हो जाता है on what and who you are and what you become. It would be terribly boring if we all came from like... Do you know that in UP there is a district called as Ghazipur or something? Ghazipur shayad. It was independent before independence. No, I didn't know In that. 1945, some Pandey guy, he made that district independent of British, and he even had his own jhanda and everything. He proclaimed it. हाँ गूगल कर लेंगे, वो दिख जाएगा. I mean, it's like Interesting. some, I think गाजीपुर, चकिया चंदौली के आसपास है कोई जगह. सर ये फ्री है, ब्रिटिश नहीं है यहाँ पे. 45 में शायद कर दिया था उसने. Right. So politically it was always such a hotbed that I'm not even surprised. In because UP Bihar is like, that's what I'm saying. The French traveler came in I think in 14th or 15th century, and he said that an average guy yes, from the Ganges belt yes, is more intelligent than our philosopher. yes. आप बैठो उससे आत्मा परमात्मा स्पिरिचुअलिटी की बातें करो, आपको नई नई बातें बता जाएगा कि Yes. ये ऐसा होता है वैसा होता Yes. है. मुझे लगता है philosophy and arts, all of this also thrive when the bellies are full. अगर आप वही गंगा के पास अगर रह रहे हैं आप, खाने के लिए काफ़ी है, पानी है, तो फिर दिमाग दूसरी चीज़ों में जा सकता है. बट इफ़ यू बिलोंग टू अ लैंड विच इज़
like Arab a countries desert, or even parts of India where or you're Europe struggling or against Europe for the invaders, matter or of fact. yes, Yeah. where it's just so cold and so bleak and Max Muller wrote na कि he wrote that philosophy is India's. वैसे अब हमारे philosophy ने हमें से दर्शन कहते हैं. You know, such a beautiful word. Philosophy is means nothing. It's darshan shastra. yes, दर्शन मतलब होता है Yes. दिखाया जा रहा है आपको. yes. So that's what the right word. Lot of Hindi words और और थोड़ा संस्कृत elevated words. है, हाँ मतलब हाँ रिलीजन नहीं धर्म. अब रिलीजन अगर आप समझोगे नहीं उसमें मत जाइए फिर, अगर 7 घंटे हो जाएंगे और कुछ निकलेगा. नहीं बट आप सोच के देखो ना कि धर्म मतलब ड्यूटी होता है. रिलीजन मतलब आपको क्या फॉलो करना है. आप उसको अंतर को देखिए. फिलॉसफी मतलब कि आप ज्ञान दे सकते हो. दर्शन मतलब आप बोल रहे हो कि ये देखो, आप ये भी देखो एंड यू कम अप विद योर ओन शिट इफ यू वांट टू. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हमारे संस्कृत या हिंदी के जो शब्द हैं उनका मतलब अंग्रेजी में नहीं निकल पाता क्योंकि अंग्रेजों के पास वो शब्द है नहीं डिस्क्राइब करने के लिए. सो मैक्स मुलर सेड कि इंडिया में फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र इसलिए इतना आगे गया क्योंकि जंगल में चले जाओगे आप तपस्या करने को तो जंगल में इनफ है, खा लोगे, पी लोगे, जी लोगे. मतलब वहां पे ऐसे इतना खतरनाक कुछ नहीं है कि आप मर जाओगे. आप ये काम यूरोप में नहीं कर पाओगे कि आप बिना कपड़ों के जंगल में चले गए मर ही जाओगे फॉर श्योर. आप अरब में नहीं कर सकते ये काम. एंड दैट इज द रीजन व्हाई फिलॉसफी इंडिया में इतनी ज्यादा डीप डेवलप हुई. अ गर्ल फ्रॉम कोलकाता, चार्टर्ड अकाउंटेंट. आई एम कोलकाता. अच्छा, मैंने कहा किताब आप मेरे पे आके नहीं, आप थे तभी किताब पे जाएंगे ना. किताब लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? एग्जैक्टली फॉर द रीजंस दैट यू मेंशन्ड. अगर बड़े होते वक्त आप सीए, अकाउंट्स और टैक्स भी से जूझ रहे हो तो एट सम पॉइंट फिर एमबीए व्हिच इज़ लाइक मदर ऑफ ऑल, लाइक लिटरली इट डजंट, तो उसके बाद तो कुछ तो आर्ट्स में करने की ज़रूरत होती है. नहीं नहीं होती, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती. बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मतलब जैसे लॉट ऑफ पीपल यू आर डूइंग इट डिफरेंटली राइट. बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हु आर आईएम की डिग्री है मतलब 1 करोड़ की सैलरी ले रहा हूँ और ये कर रहा हूँ और वो कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ. एंड यू डिडंट डू ऑल दैट or you have done it and then you left कि चलो. No, actually, I think for me, I came from a family जहाँ education was really important. जैसे कि मैंने आपसे कहा यूपी बिहार में मतलब या तो नौकरी करो या फिर मतलब गुंडागर्दी करो. तो most people in my family. Had you been a good gunda, by the way, given an opportunity? Going back to our discussion on women being violent? Yeah. Maybe. Oh. You have something in your eyes, by the way. Oh, no. I'm a very gentle, empathetic. No, without Mostly. a doubt, without Mostly. given an आप मेरे opportunity. बच्चों से पूछ लीजिए. Actually, they would give you the. Please go ahead. Yeah. But yeah, in my family, education was really important. And तो पढ़ाई लिखाई मैंने की. But I think my father was inclined towards art. He also studied. But he always gave me the flexibility to choose what I wanted to choose. So for me, I was lucky. I had no family pressure. And I think very early, I started earning when I was barely 17. I had a job at that time. What were you doing at the age of 17? क्या कर रहे थे आप? I said I have a job and then I feel terrible saying this, but I used to model. It wasn't like a high pressure job. It was like a fun thing, but I was you got earning paid, a lot right? of Yeah, money, yeah, you know, for sure, and yeah. I was financially independent. So I think at that stage, जब बहुत पैसा आ जाता है and you're so young and you don't know what to do with it, and literally for like shooting for a day or Had 2 you days. met me, you would have given it to me. Huh? Sorry. My point is, I think very early I realized money is not exciting. Like literally, I would come and just give it to my dad to say, put it somewhere and do something. I mean, I wouldn't even be interested in spending it. मैं अभी भी आप कह रहे थे that Gucci whatever, अभी भी मैं 200-300 रुपए के ही कपड़ों में घूम रही हूँ और 50 रुपए के नेकलेस में. And I realized that if money doesn't drive you or if money doesn't have much value for you, it really frees you up. That's true. And I keep saying this, the older I get, I feel it more and more कि अगर आप पैसे की अहमियत को थोड़ा जीवन में कम कर सकते हैं ना तो लाइफ में रिस्क बहुत ले सकते हैं. तो with me, I followed my heart. And what your father was doing? My father is engineer, MBA, had a corporate job. He was the director at one of the Birla companies, at several actually, not one. तो जो हम इंडिविजुअल लाइव्स की बात कर रहे थे ना मैम, तो उसमें क्या होता है कि माय फादर वाज अ सिक्योरिटी गार्ड, राइट? आई डोंट थिंक लाइक द वे यू थिंक.
No, of course, we are shaped हाँ, by who हाँ, we we are are. No different. doubt We're about different it. people. No I don't doubt think the about way it. you think. I mean, I also do not give a lot of importance to money, but it's still very, very important for me. No, I hear you. I hear you. And I have to say this. It's not that my parents were rolling. We came from a regular middle class family where money was important. ऐसा नहीं है कि मुझे pocket money मिल रहा था और मैं ऐश कर रही थी. I have to say that because you're putting me on the defensive. I do I am. realize, yes, I am privileged. इसमें कोई शक नहीं है. And I say this again and again. And not just forget the fact that I never had to worry about having food to eat and a place to stay. But I'm privileged because I had the kind of parents that I have who always एकता कुछ भी कर ले was fantastic. Great. कुछ नहीं भी करे तो was fantastic. That kind of supportive environment shaped who I am. And I think the ability to take risks is not necessarily from whether you come from wealth or you don't. The ability to take risks in life comes, I think, from a large part is आपका परिवार आपके साथ है कि नहीं. That's true. और अगर उनके एक्सपेक्टेशंस आधे लोग तो अपने परिवार के एक्सपेक्टेशन से ही जूझ रहे हैं. मुझे वो नहीं करना पड़ा. तो मेरे लिए Especially आसान लड़कियां था. तो बहुत ज्यादा. लड़के भी नहीं, लड़के करते हैं. बट लेट मी टेल यू समथिंग. मैं हमारे यहाँ पे ऑफिस में बहुत लोग काम करते हैं, तो मैं इंटरव्यू लेता हूँ, तो लड़कियों का इंटरव्यू हमेशा परिवार के एक्सपेक्टेशन के आसपास ही घूमता है, और इट्स सो इरिटेटिंग. बॉयज़ का इंटरव्यू उनके एम्बिशंस पे घूमता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. लड़कियों का इंटरव्यू उनके परिवार के एक्सपेक्टेशंस पे घूमता है. और मैंने इतने इंटरव्यू, हज़ारों ले रखे इंटरव्यू, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बार बार ये देखने को आता है कि लड़कियां हमेशा इस पे जाती हैं कि परिवार वाले क्या चाहते हैं, लड़के हमेशा मैं क्या चाहता हूँ इस पे होता है. आज भी यही होता है. I just wish आप बात कर रहे थे, and I was in my head, I was like, I wish I could say no, you're wrong, like literally, like, but you're right. I'm a part of many women's groups जहाँ बहुत बातें होती हैं, and we tend to be expressive, and जहाँ वर्क लाइफ बैलेंस पे टॉपिक अगर छिड़ जाता है वो ख़त्म नहीं होता है. देयर इज़ सो मच एंग्स्ट एंड फ्रस्ट्रेशन एंड द कॉन्स्टेंट स्ट्रगल टू बैलेंस बीइंग अ मदर एंड मेकिंग मनी टू फॉलो योर हार्ट एंड टू फॉलो what is expected, and we're constantly battling that, which is why I love the fact that कहानियों में जब लिटरली आप कहीं भी जा सकते हैं. आई लाइक द फैक्ट कि रसीली मेरी किताब में she is a mother, but she denies her child. She doesn't want to be one. That the women are following, there is no parivar, there is no somebody else, it's only me, myself. मुझे वो पहलू भी अच्छा लगता है कि बिकॉज वो असलियत में दुनिया में हम देखते नहीं हैं. जैसे आप कह रहे हैं आपकी सारी इंटरव्यूज एंड इन माई लाइफ एज वेल, आई विश इट वॉज डिफरेंट, बट ऐसा होता नहीं है. तो अभी रसीली की चर्चा शुरू करी हमने, ठीक है. I was watching a movie called as Ghost of My Girlfriend's Past, Matthew McConaughey and Michael Douglas. So in that movie, Michael Douglas is uncle of Matthew, okay, and he lives his life like दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चल रहा है, एक शानदार गाड़ियां हैं उसके पास, और at the age of 65 also he's very dashing and young girls are attracted to him and he's a sugar dad and all that jazz, right? And then Matthew's there. Matthew's uncle is my hero, right? Rasili जैसे आप कह रहे हो कि Rasili is an independent. So उस फिल्म में क्या होता है, towards the end, Michael Douglas, when he dies, there are two people who come to see him off. One was his best friend and another one was Matthew. So the question is that you can be Rasili, but you can't. It's like Una Bomber. When he said that you can't eat your cake and have it too. तो दोनों नहीं हो पाएगा ना. My point is, do you really want cake? मतलब my point is, do you want a funeral with 50 people, or do you want to live your life and not give a damn कौन आए कि नहीं आए? My point is this. But हम lot of सोचने का people want it, right? अब वो तो individual है, but मेरे हिसाब से like again it frees you up. I don't want 100 people at my funeral, but you want to live in the way on your terms and lead a genuine and honest life where you're honest to yourself. Or is it important कि मेरे जाने के बाद 4 लोग स्टेज पे खड़े होकर स्पीच दें? These are choices that we make. So I'm just throwing it back at you. You're going with the assumption that that is aspirational. I'm saying नहीं, केक नहीं चाहिए. Don't eat it, don't cut it, give it away. That could be a perspective.
Okay, that's another good perspective. तो मैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि स्पेशली इफ यू लुक एट द countries like America, right? So there, this thought process is very prominent that let's live our life, right? And now it became kind of a pandemic Yeah. wherein a lot of women, like said 24% women are single mothers. Now, single mother, the mother is very, the mother is definitely independent and she's doing what she wants to do. But there are consequences to it. See, culturally, countries are different. So I don't want to, I cannot, like आप मुझे अमेरिकन कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ रहे हैं, मैं वहाँ तो विजिटर के हिसाब से गई हूँ, तो मुझे वहाँ की सभ्यता, वहाँ के आप मुझे इंडिया के बारे में बताइए, मतलब इंडिया में this शायद appeals more to me. 4-5% हैं लेडीज जो सिंगल मदर्स बाय चॉइस हैं शायद कि Right. they left their husband, they don't Right. want to be with them. So my point is, if you look at it from an Indian context, how have we been brought up? What kind of lives are we leading? What kind of lives are we choosing to live? Do we have a choice Indian girls at are all? brought up in a very misogynistic way. उनको Not तो all, no. आप पूरे that's the other thing. पूरे भारत को सब लोग एक ही. The east is different. The west is different. The south is different. The north is very different. तो this is चलो the other नॉर्थ की thing. बात करते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, छोड़ो सबको. But this is where it gets dicey. I'd rather talk about the other parts. But Okay, all right. तो एक मुझे और बताइए कि actually आपको होमवर्क करने की जरूरत पड़ी. नहीं, आपका पर्सपेक्टिव इतना अलग है ना कि मुझे ना सचमुच में सोचना पड़ रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू प्रोसेस योर पर्सपेक्टिव बिकॉज इट्स डिफरेंट and honestly speaking it's a little confusing to me as well. Tell me why. I'll explain it. Ask me why. Because at one place you are you are saying that no, I have a family, I have this, I have that. Another place you are saying नहीं, कि अगर मैं रसीली की तरह होती तब भी मैं बहुत खुश होती. मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ. Okay, this is the correction. As a writer, I'm very boring. As an individual, as a real person, very. The writing is distinct from me as a person. Who are you in the novel? No, I'm आप not. किसको represent करते हो? मतलब you're asking me like मैं कुछ I wish. No, मैं तो बहुत ही ज़्यादा साधारण और बहुत ज़्यादा बोरिंग हूँ. अभी यहाँ ख़त्म होके वीकेंड शुरू हो जाएगा. I will choose a movie to watch. Forget the name. Unlike you, I will not remember it. Order in Chinese, and that is my life. हम उपन्यास के द्वारा अपनी जीवन को लोगों पे लादना is not my aim. कुछ तो होता है कि मैं मेरी जैसे जब भी हम कुछ लिखते हैं कुछ ना कुछ तो रिलेट करते हैं. Of course. तो क्या? So it depends on what kind of writing. Okay, so this is I'm going to extrapolate your question and assume an answer. Please do it because you just So when you screwed all my question list. So go ahead. In which case we'll flip it around. I'll ask you some. So the thing is with writing, I sent out a newsletter once a month, not too often. And उसमें जो मैं लिखती हूँ is me. How I feel, what I feel, my perspective, the art I like, my philosophy. So that writing is very, very personal. Because उसमें कहानी नहीं है. उसमें I'm just writing thoughts and talking. It's a conversation. When I would write for television, it was 3 lines. Literally, I was given 7 seconds. May 5 lines, so many words. That writing is different. That is fact and information in the absolutely least possible amount of words, right? It's different writing. When I write columns for some publications, those are opinion pieces which are based on current affairs or some trends or news, which again have to be objective, which are based on facts, which is again a little synthetic in the sense they're opinion pieces. It's not my heart, right? And this box of lies is a story. कभी कभी मुझे लगता है all writing cannot be categorized as one. ये कहानी है. हम कहानियाँ बोलना भूल गए. हम कहानियों को बहुत ज़्यादा कभी कभी महत्व दे देते हैं और कभी कभी बिल्कुल भूल जाते हैं. Stories have a place in life, and this is just a story. So who's this lady on top of this? You want a long answer or a short one? Long is better. I don't know. It is by this painting appealed to me. It's by a painter that I really like. And I was in the process of publishing my book as a struggling author. I have no money. Also for reasons I mentioned, I have very little money. So I was trying to optimize.
So I had to work with very limited resources. So I found a painting that I really love, and I thought it fits. नहीं तो मतलब if you're asking me कि is she real and is there a story and is someone I know? नहीं. Characters is it someone I know? जॉ नहीं. लाइन मैच कर रही है थोड़ी थोड़ी किसी के साथ में, somebody I know, तो Really? ऐसा लगा. हाँ. So that is the beauty of books, right? When you read or or art, when you see something, if you see something that is familiar or that appeals to you or catches your attention or makes you feel something or you remember something, that is the point of all art, I feel. Whether it's music, whether it is a painting, whether it is a story, I feel if she reminds you of something, even for 2 seconds, it's... Okay, all right. तो ये प्यार का love story without love. Why? That was just a catchy tagline. Why are you so damn honest? Why no, are you? I'll tell you, Answer the Deepak came question. towards... Why are you so damn honest? Because you have been honest from the moment go. And unfortunately, एक और बात देखिए No, I'm मैंने. not honest, by the way. Let me tell you I'm one thing. absolutely behaving myself. No, you're not. Let me tell you one thing. You are honest and you're a little embarrassed about it. कि ये honest, I thought that ये podcast interview होने वाला है. ये psychometric test. I refuse. I did not sign up for this. you're honest and you're like कि ठीक है honest, हाँ ठीक है हूँ honest, तो क्या फर्क I think बुढ़ापा आ रहा है. You say what the hell, nothing matters. When you go back to philosophy and say सबको मरना है, it doesn't matter. अच्छा, तो मैं ये कह रहा था actually इस लाइन पे Yes, मैंने I'll tell you the tagline कहाँ से. हाँ. When I began to write it, I really didn't have much of a structure. I didn't know the story, what direction it would take. I was just writing bits and pieces of it and I was stitching them together in some haphazard way. So when I started, I like the idea of love and I like the idea of people struggling with it. I really like the idea of people struggling with love. So when I started with the assumption that that's what I'm going to be writing on, human relations between men and women and other combinations. But when it ended, and literally when I was reading it again, like literally right at the end, I was like, इसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है. Like literally it wasn't there. So, and then the tagline is cheeky, I admit, but it was a revelation for me कि कहने को it's a love story, but really. That's true. But वो कहते हैं ना उसे कि अगर आप humans को देखोगे तो at the moment they are very serious, but if you look at their life for 10 years, it's a joke. I don't agree. Absolutely not. I don't want my life to be a joke. My life is No, meaningful. not yours. No, I would not agree with that to mother of all. Absolutely not. My life is meaningful. It's full of promise and it's been... So the love की problem ये है कि let's say hypothetically I fell in love with someone, right? I got married. शादी को 10 साल हो गए. The love which was on day one, right? It's gone. Now it's more of a respect, more of a, equality. That, for example, my wife, I'm talking my example only. My wife, it's more of a respect, more of equality that, she's an individual which has her own choices to make. I am an individual which I have my own choices. तो वो जो प्यार है, वो अब respect के form में आ गया है ना? तो ये जो टैग लाइन है ना, इसीलिए मुझे ये थोड़ा सा लगा कि ठीक है, मान लिया कि सितारा और वो जो कैरेक्टर जो उसका पति है या उसका पति और वो जो लेडी है दूसरी. I don't think there was love there to begin with. But coming back to what you said ना, आपने कुछ देर पहले कहा था कि अंग्रेजी जो भाषा है वो बहुत ही सीमित है in terms of words. Exactly. And we were talking about philosophy and other. The thing is, आप भी वही कर रहे हैं, right? कि जब हम शुरुआत में वो लव था, बाद में respect या जो भी the words you're using. My point is, it's not necessary to define it at every stage. These things evolve. And they evolve and become creatures of their own that don't need to always and should not be the same. That's one. I mean, it shows nobody has grown if it remains absolutely the same. Also, it's highly boring. Sometimes people lie as well. They overact. कि बहुत प्यार करता हूँ and all that jazz. So they are overacting. अब उसमें मैं नहीं जा रही हूँ commenting, लेकिन मैं कह रही हूँ these are creatures that have to. Yeah, you are a writer. You should be the person who should be saying हाँ होता है ऐसा, मैंने देखा है, मैं ऑब्जर्व करती हूँ. So glad होता है. हाँ, वही कि तो लोग कह रही बहुत हूँ. एक्टिंग करते हैं. बिल्कुल. It's like वो फिल्म कौन सी आई थी यार, मैं फिल्म के एग्जांपल देता हूँ, वो
आप झटपट एग्जांपल्स दे रहे हैं because of good memory and I should be the one saying this book and that कहानी. वो कौन सी वो प्यार वो जिसमें वो है यार रणबीर कपूर और प्रियंका रणबीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा और वो अनिल कपूर और दिल धड़कने दो, है ना? उसमें क्या होता है कि अनिल कपूर की जो वाइफ होती है, अनिल कपूर इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी इज लाइक बेबी बेबी बेबी, एंड देन अकेले रूम में आते हैं एंड देन ही सेज बेबी, तो वाइफ से इसकी एक्टिंग मत करो, कोई नहीं है यहाँ पे. It's I find that so interesting. Aren't you glad? मतलब हर तरह के that little thing that you mentioned, right? अगर उसको आप analyze करने लगे तो वो कितने कितने directions में जा सकता है. कितना Maybe she डीप है. loves. Now the deep again is an overused term, but I'm saying it's नहीं डीप interesting. है वो, मतलब शी इज जस्ट टेलिंग हिम कि यू डोंट लव मी, एक्टिंग मत करो. Because Or this maybe she really wants him to. no, because if you watch the movie, this guy is flirting with every walking, crawling woman. जो मिले उसके साथ फ्लर्ट करता रहता है and he tries to have sex with them. Right. और तो सडनली यहाँ पे आके अकेले रूम में, और ये इसको सब पता है वाइफ को But कि isn't that what makes men and women so interesting? End of the day, the journey is alone. It's who you're with, right? Um, if we are lucky to find people who you can be with, it is absolutely the most beautiful blessing. If we can be who we are and accept the person for who they are. But more often than not, वो pieces थोड़े से टेढ़े मेढ़े हम जुड़े हुए हैं, not perfectly. और उसमें फिर वो थोड़ा सा एक दूसरे से घिसते हैं, रगड़ते हैं. accept the person who they are कैसे करोगे आप? People lie all the time. How would you accept? Hypothetical question. If tomorrow You're asking me to say that do not believe that there can be somebody who would not lie. I'm hoping, because not lying takes a certain amount of courage, also takes a certain amount of vulnerability to say, to meet someone. And I'm not saying you do it to like 1,000 or 100 or 10 people. It needs to be one, I think, in life. And that can be any relation. It can be a friend, it can be your son, it can be a lover, it can be your partner, it can be anybody. But again going back to the book, yes, today's people, शादी हो चुकी है, ईमानदारी से पति बोलता है I am also having sex with this lady because I like her, and hypothetically if I like somebody else I'm going to have sex with her. What do you think will be the wife's reaction? again, these are like some you want me to react as per who I am? You want me to react as per what is culturally accepted? I want you you to want me to react- react I want you to react as a from a woman's writer. perspective? As a writer who has observed this world, as a writer जिसने दुनिया को ऑब्जर्व किया है, उसकी तरह रिएक्ट करिए. आपकी कैसे लेडी रिएक्ट करेगी? मतलब आपने जैसे 50 लेडीज को देखा, हो सकता है एक उसमें से माफी कर दे, कोई बात नहीं, जो मर्जी होगा. बहुत लोग माफ कर देते हैं. एक नहीं, अच्छा, बहुत लोग. अब माफी में भी आते हैं. हाँ. माफी की प्रॉब्लम है कि ठीक है ब्रो, मैंने माफ तो कर दिया तेरे को, पर जब मौका मिले तो वो रिमाइंड कराती रहूंगी मैं कि किया गया था तूने. ठीक है, वो भी है. अब फिर से सुशील जी आप स्टीरियोटाइप्स पे चले गए. मैं ये कह रही हूँ कि यार पूरी दुनिया स्टीरियोटाइप्ड है, क्या करोगे आप? it's true. Oh my God, how terrible. Which is why we should use opportunities to say नहीं, थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, थोड़ा सा अलग भी हो सकता है. And अगर हम moral judgment छोड़ दें, उसको अलग कर दें, तो we as a writer, I don't want to bring morality into this at all. Forget as a writer, even as an observer of humanity, as just somebody who's just one person in society, I'm very, very clear about who I am and where I want to be and who I want to be associated with and who I want to be vulnerable with. But me as a writer or just a participant in society, I'm an observer. I don't want to be morally have judgments on all the chaos around me. I think all of this is such interesting fodder. It makes you think, बचपन में हम लोग कहानियाँ जो होती थी, invariably started with once upon a time and they lived happily ever after, and those stories were beautiful and they had a place in our childhood for a reason, right? But कभी-कभी मुझे लगता है कि अभी तक वो बहुत अच्छी लगती थी मुझे. I'm such a sucker for all those stories, but as you grow and become an adult, you don't want to keep reading that. It's highly boring. जहाँ conflict होता है, जहाँ पे चीज़ें fit नहीं होती हैं, वही interesting हो जाता है. जहाँ थोड़ा तो आप टकराओगे ना, अगर बहुत ही आराम से हर चीज़ बहते रहे तो what is the point? तो from a writer's point of view, I want to just watch. Very nice.
अब आप मुझे मार्क्स भी देंगे? नहीं, मैं आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं दूंगा. But I am like if you ask me the way I judge people, I could be a judge. You're admitting you judge people, which is a start. Definitely. Why not? I mean, No, I agree. why to lie? No, I agree. Why to lie? I agree. But मेरी प्रॉब्लम पता है कहाँ पे शुरू होती है? If I start liking somebody, judgment गायब हो जाती वो है. सबके साथ है. हाँ. And thank God for that. I think that makes us human, right? हाँ हाँ. अगर हम if we और are and then lot of times I've been tortured by these people. that is also life. Because I'm very careful. I'm very guarded कि ये इससे ये उम्मीद कर सकता हूँ मैं. ठीक है. But the moment I lose my guards, गड़बड़ हो जाती है. वो आप ही के साथ नहीं, वो सबके साथ होती है. And like I said, I think that is what makes us. कभी कभी कहना आसान होता है, you know, to let your guard down and to be who you are and to let other people into your life. And I constantly struggle with this because, like I said earlier before the cameras started rolling, कुछ साल पहले तक my need to actually interact with people is fairly low as an individual. I like observing. I don't really like to necessarily be in the middle Observing of it. is another. It's a fancy word for judging. But go ahead. Yes, I judge too, absolutely. I mean, I don't want to morally judge, ever. That I don't. But judge as to who and where and why and how this person is, yes. So, like literally, 1.5-2 साल पहले तक I wasn't on social media for years. I have given up my phone for months at a time and again. And not because of some great whatever. It's just, I don't miss it. When I missed it, I got it back. It was... But कुछ और कह रहे थे, कहीं और बात चली गई. Sorry. No, go ahead. This podcast is not about, it's about anything. Okay, no, Go ahead. then it will never end. No, that's fine. Let me know when you want to end it. When I'm going to start eating in a little bit. That's a hint, huh? No, just... No, I'm enjoying the conversation actually. It is, Thank God. like I said, usually there's always time pressure with television. Everything you say, every second has to count and everything you say has to matter because, you know, there's no space for meandering. I actually quite like this format because there's no pressure on the guest. And clearly no pressure on the whole. Yeah, no. On me, there's no pressure. I mean, I just... so, okay, all right. इस लाइन पे मेरा सवाल अभी तक रह ही गया था. नहीं पूछिए. We never get life in one go. We always get life in moments. हमें पलों में जिंदगी मिलती है. There are moments when we all love anybody, okay? For example, the mother in this story was in love with her Jal Mahal. That lady, because when the police walas come, she's like, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ये इतना बड़ा घर है, हम इतने खानदानी लोग हैं. That lady was in love with the mahal. So this is just a cheeky line because प्यार सभी में बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं. क्योंकि वो momentarily अगर आप लव देखते जाओगे तो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्यार तो कर ही रहे हैं. Even that Kareem Lala. He is also in love with that guy, but master, yes. It's like वो again movie का example. नहीं बताइए, थोड़ा रंगीन हो जाता है. That's great. What was the name of Delhi Belly? I love him like I hate him. So Kareem Lala loves that Malik like the way he hates him. You know, I love him like I hate him. I love that line. मुझे हमेशा लगता है versus something staid and simple and in the middle. I think you should be in the extremes a little bit. And when I was growing up, and even now, I think I'm often told I'm too passionate about things and like it's a bad thing. मेरे दिमाग में it's never a bad thing. Why is it a bad thing? Mostly, that is mostly. नहीं. Because sometimes it can be offensive to people and sometimes you do tread on toes. अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि क्यों परवाह करना, जिसको जो सोचना है सोचे. नहीं, आप मेरे चेरी पिक नहीं कर सकते मेरे डायलॉग. मैंने ये भी कहा था हमें समाज में रहना है और समाज के कायदों को फॉलो करना है. मैंने ये भी कहा था. You should like ठीक है, जो सोच रहे हैं सोच जा.
फिर तो बातचीत ही बंद हो जाएगी। नहीं वो एक थोड़ा तर्क होना चाहिए, मुझे हमेशा लगता है थोड़ा आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। वो नहीं होता शौर्य कि जाओ उसको ही बोल दे, जाओ उसको ही बोल दे। मैंने बोला है, एक शाहरुख खान एक अपने इंटरव्यू में बोल रहा था, कई बार मेरा मन करता है बोलूं जाके, हाँ मैंने ये बोला है, हाँ मेरा ये मन करता है ऐसे बोलने का, हाँ इस मुद्दे पे मेरी यही राय जो तो सुनी है। ऐसा है, वो शाहरुख खान है, वो कह सकते हैं, वो इजाजत हमें नहीं है। सो चलिए ठीक है, ओके रसीली पे सवाल करता हूँ, क्योंकि रसीली इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन योर बुक। जो रसीली जी हैं वो थोड़ी एरोगेंट है, उनको लगता है कि इसकी माँ की आंख, मतलब मुझे किसी चीज से परवाह नहीं है, बच्चा है उसकी पर किसी, मतलब आई एम हु आई एम। इस पे मेरा कई बार सवाल होता है, हु एल्स कैन यू बी, एनी व्हिच वेज। interesting. No, actually, okay, but this will carry on. I would get back to the book, so I won't digress. No, but you in answering this you can go back on that as well. तो ये जो एरोगेंस है, ये तो 5 साल का ही है ना, जब तक ब्यूटी है तब तक एरोगेंस है। उसके बाद तो रसीली जी को जिन मर्दों को वो फूल बोलती हैं, वो मर्द किसी और रसीली को ढूंढ ले जाएंगे। So this is the beauty. And to come back, again, you are falling into the stereotypes of women only feeling powerful in their youth. मैं आपको रियल लाइफ स्टोरी बताती हूँ, एंड दिस इज़ माई एक्सट्रपलेशन। एक तवाइफ हुआ करती थी उस ज़माने की। Wife is such a pretty word, right? It doesn't sound like, jar, for right? example, yeah, it's like you say she's a whore, and you're like, shut up. अब फिर अंग्रेजी और उर्दू और हिंदी में मत Tawaif is such a Mata, beautiful word. Tawaif. there are some languages which we can analyze it technically to say the syllables and the sounds, but I will not digress. I will come back क्योंकि मुझे आपको कहानी बताना है। तो जानकी बाई अलाहाबादी उनका नाम था, एंड उनका गायन एंड मतलब इलाहाबाद के कल्चरल सेटिंग में, मतलब शी वाज द स्टार बाय फार, राइट? एंड Star by far. भाई नहीं, तो मैं पोएट्री असली नहीं कर राइटर रही, आज आया हमारे शो में। उस लेवल का, लाइक कविताओं में क्लास बात कर 3 रही है। She was a star by far. class 3 rhyming. I should show you my poetry book from class 2. Okay. My point is कि उनका चेहरा बिल्कुल छिला हुआ था, अच्छा, क्योंकि at a young age, there are two stories, but might have been a lover or somebody had attacked her. तो उनको छप्पन छुरी से I'm so sorry. आपने बोला नहीं, कैमरा रोल कर रहा था, I didn't prepare and say ये भी जाएगा, डोंट वरी, सब जाएगा। हाँ, लेकिन मतलब हमको 100 साल हैं, फ़ोन 1.5-2 साल, तो खैर। My point is कि there was a time कि वो महाराजा के सामने, उस ज़माने में महाराजा के सामने गाना गा रही थी, एंड शी हैड द कॉन्फिडेंस। कोई उनके पास रसीली, आपने कहा 5 years लुक ब्यूटी, कुछ नहीं, अपने गायन एंड टैलेंट की वजह से शी हैड द कॉन्फिडेंस टू टेल अ किंग इन दोज डेज दैट आप मेरी सूरत पे ना जाएं, मेरी सीरत पे जाइए। So I think, and this is what I feel so passionately about, and this is what I want desperately for the reader to take away from the book, is a woman's power, a woman's confidence, a woman's self of being does not need to come from how she looks, and often doesn't. How many women around you see are film stars and celebrities and some but we feel that sense of power of just being, having that feminine energy and being a woman, if I had to say it simply. तो ये जो आप, it's a very male perspective to say Rasili will have it only in her youth, only when she's beautiful. I think as women, and it's not just men, I think a lot of women, we also tend to forget that our power lies in our sense of identity and our sense of being proud of who you are. And all of us have our own individual talents and strengths, and we know it. It's a question of recognizing it, accepting it, and never, never forgetting it. And that's what really, truly makes you attractive, even at 64 and 84 and 24 and all of it. And you can be the most beautiful person in the conventional sense. And I had friends like that, जैसे कि मैंने कहा, at 17, I was modeling in those days. I was surrounded by beautiful women. And many of them didn't feel it. So what is the point? Wow, that was good. आप फिर मुझे मार्क्स देने लगे। No, that was, I mean, see, when I'm saying that was good, that means I got your point,
I understood, and I also corrected myself. You getting me? Yes. Like I also In which corrected case, I am myself that grateful. okay, that I shouldn't have thought about Rasili the way I thought. That's why I'm saying there No, was it's great to think in yeah, because yeah. what आप जो प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं is also the most common way of thinking. So Exactly. I'm glad you did because it gives me a chance to say what I really, really feel. I'm glad you did ask. So Again, I'll give you an example of another movie. Hmm. What was the name of that movie यार जिसमें वो आप ये 3 बार कर चुके हैं. I'll give you the name and then you ask Sunny. Sunny आप यहाँ आ नहीं जाइए. because you know when I say that it gives my brain some chance to think about in detail and I know he will never tell me the name of movie apart from Hindi because he never watches English movies. क्या है यार वो आप कहानी बता दीजिए, नाम छोड़ दीजिए. कहानी बता दूं आपको ठीक है उसमें क्या होता है कि ये जो ये हीरो होता है ये हमेशा लड़कियों के पीछे भागता है तो ये लिफ्ट में एक पादरी से मिलता है और पादरी इसको बोलता है कि बेटा सुंदरता जो होती है वो आत्मा की होती शरीर की नहीं होती तो बोलता है पादरी क्या बकवास कर रहा है मतलब ये मोटी सुंदर थोड़े होगी सो तो पादरी से इसकी कहता आज से जा भगवान करें जो लड़की जैसे सुंदर होगी वैसे तुझे दिखेगी इसके साथ क्या होता है कि जो लड़कियां अच्छी होती हैं वो इसको पतली दुबली हॉट दिखती हैं सारी ठीक है तो इसके आसपास पूरी दुनिया मतलब इसको एक बहुत ही नजरिया नहीं बदलता बहुत ही एक मोटी सी लड़की होती है जो इसको बहुत दुबली पतली हॉट लगती है ठीक है तो ये उसके साथ घूम रहा होता है और बाकी सब लोग इसके मजे ले रहे होते हैं उसके फ्रेंड्स भी कि तेरे को क्या हो गया है हिप्पो के साथ घूम रहा है एंड ऑल दैट जैज लास्ट में उसे पता चलता है फिल्म जब खत्म होती है कि जो द पॉइंट विच यू आर मेकिंग कि इट्स ब्यूटी इज नॉट अबाउट if someone is fat or someone is thin it's about how the person can make you feel But it's not about Atma and all that. I'm not saying that at all. What I really want to say, I mean, yes, no, actually, I will not even pretend to be nice. No, yeah, Atma and inner beauty, outer beauty doesn't matter. It's just I don't know. I don't even know how to react to that inner and outer and like there's a difference. My thing is if two people just forget two people when they look at each other and they really see each other when they are attracted to each other very often is not necessarily because you're beautiful. You're physically attracted also. It doesn't have to be, everyone doesn't have to be, जैसे आपने कहा, thin and acidic. The fact is around you, you look at your lives and look at people that you've liked and people who have made a difference and people you want to turn around and look again or people you want to talk to. It's not beautiful people in the conventional sense. वो कुछ होता है, which is indescribable. It's not inner beauty, outer beauty. I mean, I'm glad that men and women are made in a way. Like literally, हमारा species will not go ahead if we were only attracted to beautiful men and beautiful women. The fact is we are attracted to all kinds. And that's what makes it interesting. We all find our own mates in our own way. How many soulmates can a person have in his life? One of those cheesy kind of questions. Not cheesy. It's very interesting question. कि एक जीवन में कितने सोलमेट हो सकते हैं? आप मुझे इसको न्यूमेरिकली आंसर करूं कि फिलोसॉफिकली कि देखो सवाल ऐसे टाइप सवाल जो है मैंने यूनिवर्स में छोड़ दिया है जवाब आप बताइए जो आपको अच्छा लगे. I would like to believe that there are people that you can just be yourself with. I don't know, उसको soulmate कहेंगे, उसको lovers कहेंगे, उसको friends कहेंगे, उसको क्या कहेंगे. पर I'd like to believe that there are people in the world that, you can be quiet with and be honest with and... Pick your nose in front of them. Oh, and they won't mind. Oh. No, I think if there was a physical relation, you wouldn't do that because, you want to also, whatever. No, picking, no. मुझे आपको आपका सोलमेट का प्रश्न आया कहाँ से? मेरे पास सवाल ऐसे आते रहते हैं दिमाग में जो आते हैं. It's not a No, I'll tell you why I'm asking you that because over the last couple of weeks I have
a number of people have been talking to me about this. So I don't know. I sometimes, is it like, are we all following the algorithm and that's what it's throwing at us? Or is it something that really people are grappling with? Which is why I'm asking you. I No, haven't. ये वाला सवाल तो soulmate वाला तो I have been because let me tell you something. Uh, you love somebody, right? And then you also love with somebody else too. And then it's not necessary तो वो जो पुराना again stereotype कि हम हंस नहीं हैं. We are not swans, we are sharks. That's the difference. तो अगर हम swans होते तो हम एक लड़की के साथ या एक लड़के के साथ जिंदगी भर बिता लेते. मैं बेचारी सितारा की बात कर रहा हूँ, प्यारी सी हमारी सितारा जो इस बुक में. But most of the She's not प्यारी or बिचारी, huh? By the way, I completely am taking offense to that. तो मतलब, you go back to your question, but she's not प्यारी or बेचारी by any standards. सितारा is like नहीं आप प्रश्न फिनिश करो. जो मेरा मानना है, क्योंकि ना you have been आपने little- किताब खत्म नहीं की है. नहीं, किताब खत्म भी नहीं हाँ, किया. और ऊपर इसलिए. से मैंने ये भी बोला है कि आप प्रेमचंद की तरह ना सितारा को आप दिखाते रहे हो कि बहुत प्रिविलेज्ड है, पर वो कहीं ना कहीं बहुत दुखी है अपने जीवन से. Privileged, अगेन आप पैसे से बोल रहे हैं, हाँ. या सेटल्ड होना, या जो भी हाँ. मटेरियल. शी इज नॉट रसीली. देखो, एक बहुत लाइन she says in the book which I actually love. This sounds terrible because okay, but I actually like that line. see, you can be as free and upfront as you want to be, right? Whatever comes, do not be guarded. Do not say that because I can see my mother sitting there saying, नहीं एक. नहीं, you forget about everybody. अभी ये room ना, नहीं, of course not. This room is insulated, believe me, क्योंकि ये सचमुच में No, I'm insulated not going to है. say anything that's going to hike up your views and नहीं, become I am very, not. Let me tell you something. Let me tell you something. controversial. And नहीं, ये जो इश्तियाक साहब है, इन्होंने एक मेरे से इंटरव्यू में बोला था कि मोहनदास गांधी वाज रेसिस्ट. इश्तियाक साहब ने ये बात बोली. तो इन लोगों ने बिना मुझसे पूछे उसका शॉट बनाया एंड सेंड इट फॉर माय अप्रूवल कि ही सेड मोहनदास गांधी वाज रेसिस्ट. आई डिड नॉट पब्लिश इट. आई कॉल्ड हिम. आई सेड सर, ये एक शॉट बना है, आपको लगता है इसको हमें भेजना चाहिए? ही इज लाइक, भेज दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जो सच है वो है. तो आई बिलीव इन ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड. आई हैव बिन टॉकिंग टू पीपल. मैं मजाक कर रही थी. You're assuming that I'm being guarded because I'm afraid of what I'm going to say. It was नहीं, just बट यू conversation. कीप No. चेंजिंग कि नहीं ये वाला नहीं, ये वाला. No, it's just because I'm trying to think faster than I speak. Let me take a step back. ओके, You'll have to repeat the question. मैं भूल चुकी हूँ. फिर मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ इस पे. ले What would you लीजिए. like to have? और मुझे वो लोग समझ में नहीं आते. जैसे एकता जी इज राइटिंग, राइट, और शी इज रीडिंग, है ना, खुद के लिए कर रही हैं. तुम इम्प्रेस क्यों हो रहे हो? लॉट ऑफ पीपल व्हेन आई एम रीडिंग, आपको नहीं समझ आता है? I understand it. आई एम गोइंग टू फ्लाइट, मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ. हाँ. तू क्यों इम्प्रेस हो रहा है? तू भी पढ़ ले, बुक 400 रुपए की है भाई, ज्यादा महंगी नहीं. नहीं, I'll tell you क्यों impress हो रहे हैं. हाँ. क्योंकि I always say this, हम किसी कलाकार से मिलते हैं ना, like मैं तो बहुत impress हो जाती हूँ. मुझे हमेशा लगता है because हम नहीं कर पा रहे हैं. The other day I went for a concert. It was someone I met. मैं उसको अच्छी तरह से नहीं जानती हूँ, but हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई. And she said, next time I perform, I'll call you and I'll call you. You have to come. तो एक दो बार हो गया, मैं जा नहीं पाई. तीसरी बार उन्होंने कहा, I'll just make an effort. I'll go. I'll come for half an hour just to see you perform. कर कुरा के मतलब आधे घंटे लिटरली मैं वहाँ पे ना टिक लगाने गई थी because I really liked. मैं वहाँ बैठ के, I'm telling you, I felt so jealous. I'm sitting on stage and she was playing and वो चेलो बजा रही थी and वो इतनी मगन हो गई थी, जो मतलब बजाने में, उनके साथ तबलची भी थे and उनकी जुगलबंदी हो रही थी. And I'm sitting there, I said, I'd forgotten this is why you come. Not only that, she's someone you like and whatever, but also because ऑडियंस में बैठ के ना थोड़ा सा हम झांक लेते हैं कि ज़रा सा to just steal a little bit of, I can't do it. मेरा जितना भी मन करे, I know I cannot. ना टैलेंट है, ना टाइम है, ना कुछ है. But when you see someone else do it or whatever, like थोड़ा सा, when you watch or you like or you whatever, it's a way of saying I'm a part of this. So I wrote a poem when the Supreme Court said कि Gays वाला. नहीं सुप्रीम की दिवाली में पटाखे नहीं बजाने. अच्छा. ठीक है. उस देश में जहाँ परंपराएं फलती फूलती हैं, एक हिंदू का हृदय अब निराशा से भर गया है.
अदालत के एक फैसले के लिए जो इतना ठंडा, इतना क्रूर, अपने उत्सव के मरने के डर से इस दिवाली वह खुद मर गया है। दिवाली क्या यह केवल प्रकाश का त्योहार है? खुशी और आशा लाता है, बहुत ही उज्जवल चमकाता है, लेकिन अब उसे दूर जाने के लिए कहा गया है तो अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों से तब हिंदू घबराता है। वह अपने पवित्र बंधन को कैसे त्याग सकता है भगवान राम के साथ? उसकी आत्मा कुचली गई, उसकी रूह कांप गई, सत्ता संतुलन बिल्कुल नहीं है उसके पास। लेकिन दर्द के बीच एक लौ जरूर उठती है, भीतर एक ताकत जो कभी नहीं मरती है, क्योंकि परंपराएं उसकी रगों में गहरी चलती हैं। प्रेम में निहित खून में सनी सदा उसके साथ रहती है। वह अपने टूटे हुए हृदय के टुकड़े इकट्ठा करता है, त्योहार मनाने की अपनी भूमिका निभाने की शपथ लेता है, क्योंकि कोई भी अदालत का फैसला उसकी भक्ति को कम नहीं कर सकता। अपने ईश्वर, अपने रीति रिवाजों को, अपनी पवित्र धारणाओं को वह नहीं छलता। पूर्वजों के अर्जित ज्ञान और गर्व के साथ वह ऊंचा खड़ा है, बाधाओं को धता बताते हुए प्रभु राम के चरणों में पड़ा है। दिवाली के त्योहार के लिए वह हिंदुओं को गले लगाएगा और अपने विश्वास को हर जगह चमकाएगा, क्योंकि परंपराएं समय से बंधी नहीं होती, वो सीमाओं के पार हैं, वो कभी नहीं सोती। संसार प्रश्न कर सकता है और कोर्ट अवहेलना कर सकता है, आंखों में आंसू लेकर दिवाली मनाएगा, वह कभी नहीं थकता है, क्योंकि उसके हृदय में ज्वाला प्रज्वलित होगी, प्रेम का उत्सव बहुत उज्ज्वलता से जल रही होगी। कोई भी अदालत उसकी आत्मा की प्रसन्नता को निर्देशित नहीं कर सकती, क्योंकि दिवाली उसका शाश्वत उत्सव है। हिंदू जाति उसे तज नहीं सकती। ब्यूटीफुल। आई हैव टू टेल यू, मतलब आई मतलब मैं कोई राइट विंग नहीं हूँ, लेकिन आई फील सो स्ट्रांगली, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जो आप कह रहे हैं बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपको बार बार कि मुझे बोला जा रहा है कि परंपरा इज त्योहार ही मत मनाओ, बिल्कुल दिवाली मत मनाओ। नहीं, आप बातें से नहीं, द कविता इज मच मोर सॉफ्टर एंड नाइसली पुट, मतलब बिल्कुल सही है। हम्म, मैं हर दिवाली पे पटाखे जलाती हूँ, हर दिवाली पे। यू नो दिस गिल्ट ट्रिपिंग ऑफ द वोक जनरेशन, एयर इज हाँ हाँ गेटिंग हाँ 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 पोल्यूटेड, हाँ ये हाँ हाँ वो, हाँ। एंड मुझे लगता है देयर मेनी वेज टू कंट्रोल इट, बट ये नहीं, बस ये नहीं। एक एक और पोएम मैं आपको सुनाता हूँ, ये मैंने बहुत इंटरेस्टिंग लिखी थी, ये लास्ट है, इसके बाद और नहीं पकाऊंगा मैं आपको। नहीं नहीं, पका ही नहीं, कविताएं तो इज ब्यूटीफुल। ये ये मैंने आप एक दो कैमरा पे कर रहे हैं, विल शी टॉक अबाउट इट, डू इट ऑन कैमरा? हाँ, कैमरा इज ऑन आई गेस। Oh, it is? हाँ Then I have to sit properly. You have to tell ठीक me है। ना beforehand. हाँ. हाँ, तो ये क्या है कि ये मैं कविता सुनाता हूँ, आई होप आप उसको पकड़ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं भी खड़ा था उस भीड़ में, मेरी आंखों के सामने का मंजर, मेरी आंखें, मेरी बेशर्म आंखों के सामने का मंजर। हजारों एक साथ नारे लगा रहे थे अपने अल्लाह के अकबर होने का। उनकी वो आवाज़ जिससे मेरे शिक्षा मंदिर की दीवारें कांप रही थी और एक एक करके गिर रही थी। मेरी कतार में एक एक करके 7800 भिक्षुओं की गर्दनें काट दी गई थी। मेरी भी बारी आ रही थी। मेरे जीवन के अंतिम पल में क्या सोच रहा था? वो घर जो बहुत पहले ही छोड़ दिया, मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी यूनिवर्सिटी, हाय मेरी किताबें जल रही थीं, सब की सब एक साथ जलती किताबों को देखकर वे सभी जालिम अपने अल्लाह के अकबर होने के नारे लगा रहे थे। पुस्तकों से तो अनपढ़ भी प्रेम करते हैं, तो ये लोग कौन थे जो मेरी किताबों को जलाने में एक सुख का अनुभव कर रहे थे? आखिर कौन था ये बख्तियार? इसको काश इसके लोगों ने ये बताया होता कि किताबें सिर्फ मेरी ही नहीं, इसकी भी हैं। लोग चंगेज खान को क्रूर बताते हैं जिसने लाखों को जान से मारा, बख्तियार ने तो करोड़ों को मारा था। क्या है मनुष्य? एक विचार, विचार जो वो व्यक्त करता है लिखकर, सोचकर। आप सोचिए कि अगर उन पुस्तकों के जलने में 3 से 6 महीने लगे थे तो कितना ज्ञान रहा होगा उन किताबों में। क्या एक किताब अपने आप को सच बताने के लिए अन्य लाखों किताबों की कुर्बानी मांग सकती है? पता नहीं बख्तियार खिलजी ने वो भी किताब पढ़ी थी या नहीं। वो आप जो गर्दन को कट के गिरते हुए देख रहे हैं, वो सर मेरा ही है। जब तलवार गर्दन पे चलती है तो दोष गर्दन का भी होता है, वो कट जाती है।
It's very strong. It is. Yes. Yes. So that's what I'm saying. What I feel, what I felt as a guy who would have been standing in Nalanda University, dying that day, if I put myself in his shoes, Hmm. this is how I'll feel. And I'm not against any religion. रिलीजन की बात ही नहीं है. कभी-कभी मुझे लगता है there is no way, I mean, that I'm not going to argue this because I can't, obviously. लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है जब किताबें जल जाती हैं, वो इतिहास का भी एक पन्ना है कि कुछ चीज़ें खोना ज़रूरी है. कुछ अच्छा. मतलब it's sounding terrible. I don't know how to say this. But yeah, but that is also making sense right now. In you have to lose things also. Is आप कविता की बात करें, one of my favorite poems is, and I can't remember, Elizabeth Barrett करके, I can't, but essentially it says it is important to lose everything also. And again, I'm not condoning the loss of books and literature and knowledge and all of that. सब चीज़ पकड़ के रहना, वो any case degradation, depreciation, whatever you call it, वो तो होना ही है. But I'm forgetting the poem, but essentially it says, I'm losing my keys, I'm losing my home, I'm losing my place, I'm losing myself. Essentially, loss is also a part of growing. And at end of the day, Nalanda has that place हमारे ज़हन में, also because we lost it in some sense, right? जो चीज़ें होती हैं, और if अगर वो इंडियन म्यूजियम की तरह है कैलकाटा के एक गली में, जहाँ हर बार जाती हूँ वही चीज़ें देख के मैं आ जाती हूँ, लेकिन आई एम नॉट मूव्ड एज मच एज आई वुड बी इफ इट वाज एन एम्प्टी स्पेस दैट बर्न डाउन एंड आई हैड टू यूज इन माय इमेजिनेशन. तो आप कविता लिख रहे हैं क्योंकि हमने खोया है, और शायद किताबें खोई हैं लेकिन सेंटिमेंट पाया है. दैट्स वन वे टू लुक एट इट. वो गाना चला, मेरा दुख भी ले जा, मेरा दर्द भी ले जा. Oh my God, no, Did this you is just hear too that much. song? Yes, I love it. I have to say this. The singer is someone who's connected to my brother in some obscure dotted way. And he sent me this song 3 days ago. जो आप पोएम बता रहे हो. चैतन्य, नहीं, वो अंग्रेजी वैसे है, ही कुछ है ना, लेकिन ये. ब्यूटीफुल. ये चैतन्य का जो गाना है कि मैं चोर है, मेरे घर में आया तो मेरा ये भी उसके ले जा, मेरा वो भी ले words. जा, और ये भी ले जा. मेरा घर भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा गीत भी ले जा, हार भी ले नहीं, जा. don't play Oh my it because she God. knows it. Yeah, so I I thought. love it. मेरे घर पे रिपीट पे चल रहा है. ये too much of a coincidence हो गया है. नहीं, coincidence नहीं, because the moment you reminded me of that poetess, I thought अच्छा ये वाला गाना भी तो उससे वहीं से आता है. Yes. और इसीलिए शायद वो गाना is doing so well, because somewhere I think loss touches us more deeply than what we have. बट मुझे ऐसा लगता है कि पोएम्स लिखने के लिए आपका कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. किस चीज़ से? जिस पे भी आप लिख रहे हो, अगर आपने उसको डीपली नहीं फील किया. जैसे आई वॉज रियली एंग्री एट सुप्रीम कोर्ट व्हेन दे सेड कि दिवाली बैन कर रहे हैं, मतलब नॉट लाइक पटाखे बैन कर रहे हैं ऑल दैट. तो वो जो पूरी फ्रस्ट्रेशन है वो है उस पोएम में, कि मतलब यार अब वो क्या लगता है, ये बंद कर दोगे तो लोग मान जाएंगे. लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर आप में गुस्सा नहीं हो या फीलिंग, उतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं हो, तो आप नहीं लिख पाएंगे. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि लिख तो लोगे, पर शायद वो आर्टिफिशियल ना साउंड करे. मुझे लगता है अपने आप से कनेक्टेड होना चाहिए. चीज़ों से थोड़ा दूरी भी हो तो ठीक है. अच्छा. नहीं? Then you are the writer, I'm not. No, I'm not. Just because oh my God, by that definition, everyone is. See, don't put these definitions just because a book is published. They're writers who have never been published. Stereotype मत करो. Definition मत करो कुछ सारी भी. life. I'm telling you. Because all my life I try and fight this, that don't put people in boxes. I think हमारी आधी उन्नति बिगड़ जाती है क्योंकि हम क्या नहीं, I miss that. फिर से बोले. प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम मत दो. ये तो बहुत ही रोमांटिक टाइप हो गया. नहीं, एक गाना है ना कि हाँ, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो. हाँ, ठीक है. That's true. But such a fantastic discussion I had with you today. Thank you. It was. I too. I have to tell you, I've said this before, but I'm going to repeat it. That I walked in not expecting anything. I walked in just to talk.
But thank you for the rasmalais and for नहीं अभी for एक बाकी very है interesting. अभी नहीं एक वो आपका नहीं नहीं वो एक नहीं, I बाकी है can't नहीं miss नहीं those ऐसा नहीं होता either. एक बाकी है अभी तो खा के चलो मुझे ठीक है. It's a long drive back. नहीं नहीं But thank you again. I think when I walked in, I realized कि आप because of your work, you must be meeting so many different kind of people. So I walked in saying he's so lucky. He gets a chance to talk So across. why don't you start your podcast in your मेरे home? पास उतना मैंने कहा ना मुझे लोगों से बातचीत उतना ज़्यादा मैं कर नहीं पाती. So मार्कस ऑरेलियस ने कहा था हम्म, कि जो व्यक्ति अपने आप को ये माने कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता हम्म. उसको ही वो कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए. ये है कौन? मैंने उनके बारे में कभी सुना ही अच्छा नहीं. मार्कस ऑरेलियस आपने नहीं ग्लैडिएटर नहीं इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें जो चीज़ें हमें पसंद हो वो हम ले लेते हैं, जो चीज़ें नहीं सूट करती हैं हम नज़रअंदाज कर देते हैं. कुछ चीज़ें आपके लिए हैं और आप बहुत ज़रूरी है हम जैसे आर्टिस्ट के लिए कि उसी बहाने हम आके अपनी कला के बारे में, अपनी किताब के बारे में, अपने काम के बारे में बात कर सकते हैं. सो वी आर थैंकफुल दैट यू एग्जिस्ट. एंड व्हाई आर यू सो प्रिटी? Is that a difficult question or an easy one? I don't know, you answer the question. It's I a was question. giving my thank you speech. I पूरा, got your thank you speech. Why are you so pretty? Now Thank another you. I will question. just assume that's an elliptical compliment and say thank you. बस. So, आप मुझे thank नहीं कर रहे हैं. I'm just noticing you're नहीं नहीं you're not अरे बाबा thanking me. मैम लाइक मेरी रोम रोम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद. ऐसा नहीं है पर मेरा सवाल कुछ और है कि आप इतनी सुंदर क्यों हैं? क्योंकि मैं I'll give you the list of products. I'm using a particular shade of lipstick. I think it's number 23 some pink. सब Also बकवास है. She a brand of exercises. kajal that doesn't you were going towards that. I didn't get that. ठीक है. अच्छा मुझे एक But बात बताइए. एक साधारण व्यक्ति को इस किताब में ऐसा क्या है जो उसे जाके खरीदना चाहिए आज ही और इसे पढ़ना चाहिए? किसी को भी आज ही ये किताब खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. Amazon से ऑर्डर करो. ठीक है. हाँ मैं आपसे शायद कह रही थी कुछ देर पहले कि हम कहानियों को ना हम कहानियों को या तो बिल्कुल भूल जाते हैं या तो बहुत ज़्यादा महत्व देने लगते हैं. बट stories are needed in our lives, just because they are stories. They entertain us, they communicate something, they take us into a world that we can't otherwise go. So this is a story and I hope अगर आपको कहानी अच्छी लगती है नहीं इट्स अ ब्यूटीफुल. मैंने जैसे पहले भी कहा था कि मैंने ऑलमोस्ट आधी ही पढ़ी है. बट जो कैरेक्टर्स हैं जिस तरह से उनको डिस्क्राइब किया गया और सबसे बड़ी चीज़ ये है यू नेवर लूज द प्लॉट ऑफ द स्टोरी कि वो जो लाशें हैं हाँ. वो बहुत ज़रूरी हैं. उसको मत भूल जाना कि अरे ये तो सब तो पढ़े जा रहे हो तो फिर बेटा वो लाशों की बात हो रही है. ये कहानी का अभी असली थोड़ा मकसद कुछ suspense. और है. ठीक है. और एक मैंने कुछ तो नोट पे लिखा था आपके लिए. Actually, should I call out a few lines? या श्योर व्हाई नॉट. You want to choose the lines? द वन व्हिच यू लव. No, why don't you choose for me? अच्छा ठीक है. ओके और नहीं आपने पढ़ी नहीं. No, what I'm just why am I let going of an opportunity? नहीं चलो ठीक है. अच्छा नहीं चलिए one. नहीं यू रीड इट. नहीं one you. अरे कम ऑन इट्स ओके. यू रीड इट. Actually, why don't you give me a context and then let me find something? Or just open a page. I'm doing this all wrong. नहीं अपन करीम लाला पे ही पढ़ते हैं ना. नहीं नहीं हाँ रसीली. करीम लाला पे एक it's not good to read but उसका मैं context आपको okay आप बताइए वरना कौन नहीं सा फिर उस पे चमकी पे पढ़ते हैं. ठीक है. वो क्या था वो चमकी की लाइन की लाई डाउन एंड काउंट स्टार्स. अब पूरी किताब मुझे मुंह ज़बानी याद नहीं नहीं lie down and count stars because she's about to have the सुहाग रात and she asks What do you do? Yeah, what will you do? She says lie down and count stars. So It could was be like, interpreted in many ways. yeah. So इसमें since I'm a stand-up comedian तो एक लड़की होती जो हनीमून पे जाती. जब वो वापस आती तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुमने क्या क्या देखा. तो उसने बोला मैंने अलग अलग डिजाइन के पंखे देखे. ये लीजिए आप. नहीं एटलीस्ट यहाँ वो तारे देख रहे हैं. It's pretty a backdrop. So what मैं क्या पढ़ूँ आप बताइए. आपको मुझे लगता है सबसे Tell me the फेवरेट आपकी context. कैरेक्टर रसीली है. नहीं Rasili is easy to like because and dislike. Because she is the more powerful, interesting character. लेकिन अगर आप ऐसे ही सोचने लगे तो there are others who are जैसे एक मजली बुआ हैं और जो अम्मा जी हैं literally they don't come in the story at all. Their relationship is just alluded
लेकिन आई डोंट नो, नोबडी टॉक्स अबाउट इट, द इल्यूजन कि कभी-कभी अगर जैसे किसी हवेली में आदमी ना हो और सिर्फ अगर औरतें हों, तो there is a sense of competition, there is a sense of jealousy, there is also a sense of solidarity and looking out for each other. It's a mix of a lot of things. True, true. तो रसीली ऑफ कोर्स उसी के बारे में चर्चा होती रहती है बिकॉज शी इज़ द मोर flamboyant, interesting, easy to talk about. But there are other smaller characters, I think, that need a. So tell me, should I read you a few lines from the river? But it's very serious and boring. Or should I read you? Okay, boring वाला काट देना यार. This lady तब is फिर like, ठीक है. she's been saying this boring. मैं ये नहीं बात करूंगी, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, boring हो जाएगा. वो नहीं बोलूंगी, वो ज्यादा हो जाएगा, boring हो जाएगा. And I'm damn finding everything interesting. That is because you're a very very patient man. ठीक है, इसके बाद पूछते हैं. Please. So these are a few lines just from the perspective of a river. To be in constant motion is tiresome. I twist and turn through the mountains, I skip and run through the plains. I can never pause to catch my breath. On and on I must go on until I meet my end by the seashore. It's exhausting for me. The journey is long. And yet, if you ask the woman, staring vacantly at the sight of a beautiful full river flowing below her room, she will tell you, I've been here forever, curving past her bedroom window. No matter how fast I run and for how long, I never go anywhere. Ask her. But these the lines that you just said remind me of today's generation in America. White people, especially white Americans, are coming to countries like Thailand and to Middle East to get married. Yeah. For Asian women, the Yeah. whole They're coming all the concept, way to get married because these girls are more submissive to them than the white girls. Yes. I think intrinsically, I think maybe that is what maybe appeals. पर आप जैसी लड़कियों से नहीं मिले ना वो बेचारे, उनको क्या पता. I'm not sure. वो backhanded compliment है, compliment नहीं है, उल्टा है, so I'm not going to go do that. Okay, who's your favorite Please don't say contemporary- writer. Contemporary writer. Really? Fictional, You're going to ask me fictional, questions like that? I thought fictional. we'd move to like more Fictional, unconventional kind of fictional, question. fictional. I like, so favorite is not a good word, but I enjoy lots of different kinds of writing, and some books you carry with you, some you enjoy but you forget, some books you carry with you. And The Seven Moons of Mali Almeida, अच्छा. that was the recent one. मुझे वो बहुत अच्छा लगा. हम्म. Because it's a male voice. And I think that was one of the reasons. I've read a lot of other good books, but this one I just carried with me because he's a man talking. And very rarely, and he's a flawed man. The backdrop is the Sri Lankan Civil War, but essentially it's the... अब पता नहीं, उसकी आवाज़ में I could get a sense of, like, you understood what he's saying and where he's coming from. वो कम होता है. Generally, that association is stronger with women for obvious reasons. Not because women are more interesting. It's because I'm a woman. But this is one of those books where really... So yeah, that is one. अभी I'm reading this Japanese writer. ऐसी कोई किताब कुछ खास नहीं है, लेकिन I think अगर cross cultural पढ़ा जाए तो That's true. It just takes you into a different context, Oh, right? I It's called She and Her Cat Stories, something like that. Her Acha. Cat and Her She and Stories. It's a very simple book. It's just a kahani, but just perspectives. Like I said, I think अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, academic कुछ हो तो you read things to open your mind and to whatever, get knowledge and information and insight. And books have a way of, even the bad books, so-called bad books, and I think they have a softer way of getting to us that I think, which is why I think fiction is important and storytelling is important. They have a way of getting to us at a more emotional level. किताब नहीं भी अच्छी लगी तो. बट जो लोगों ने किताबें पढ़नी बंद कर दी, उनके लिए आप क्या कहना चाहती?
किंडल पे एक कोशिश करें, अगर बुक्स नहीं समझ में आती तो। नहीं, आई थिंक बुक्स इटसेल्फ मैं किसी को नहीं, बिल्कुल मत पढ़िए। अगर नहीं अच्छी लगे तो म्यूजिक सुनिए, चित्र बनाइए, किताबें क्यों बट पढ़ेंगे? ईमानदारी से बताऊं, डोंट यू थिंक दैट द फील एंड टच ऑफ द बुक्स, लाइक द यस, स्मेल ऑफ द बुक्स, यस, 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 बट आई गेट इट दैट नई एवरीवन बुक आने डजंट। के बाद जो एक्साइटमेंट होती है कि कैसी होगी, चलो खोलते हैं। यस, स्क्रीन नहीं पढ़े हाँ तुरंत। हाँ हाँ, यस, खोलते हैं एक बार, देखते हैं यस। क्या है ये। पर मुझे ये बात मैं कई बार कह चुकी हूँ, अगर मैं गायिका होती, अगर नहीं, इफ आप यू तो आर एन इंसान के आर्टिस्ट। ही हो ना। अच्छा नहीं, गायिका होती। अच्छा चल, आई एम नॉट गेटिंग डिवेटेड, आई विल स्टिक टू अच्छा दिस बिकॉज आई सॉरी। The thing is, with any other art form, if you want to see a painting, it takes a couple of seconds, a few minutes, to hear a song, just a few minutes. But a book requires too much investment of time. ट्रू So, ट्रू। coming back to what you said, तो बिल्कुल मत पढ़िए। अगर रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, टाइम ही नहीं है, तो there are other ways to be creative, to express, to understand the world. Any kind of art form is essentially to make sense of the world. तो you choose another माध्यम। और अगर आप फ्रैंकली मुझसे पूछे ना, आई थिंक बुक्स आर फेयरली न्यू, राइट? आई मीन गुटनबर्ग प्रेस कितना 150 साल whatever. So you don't expect books to last 500 years. There'll be another mode, and already we're seeing it, with Audible and audiobooks, and soon they'll be married to all kind of storytelling is constant, लेकिन वो माध्यम change होता रहेगा. दैट्स ट्रू। So I hear you. I love the feel of books, and I have cartons and cartons of books at home. There's no place to keep them, लेकिन एक और सवाल है कि एक जो नए लोग आ रहे हैं, स्पेशली टेलर स्विफ्ट का जो फिनोमिनॉन चला हुआ है, सिंग, क्योंकि यू लिसन टू म्यूजिक एज वेल। नहीं अंग्रेजी नहीं, but yes I know हाँ her. हाँ। You तो can't not know बहुत her. सारे लोगों का कहना है कि म्यूजिक इज सैटानिक। म्यूजिक को बनाया इसलिए गया ताकि लोग आपके दिमागों पे कंट्रोल कर सकें। हाँ. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस कॉन्स्पिरेसी थियरी? I love the devil. What can I say? गुड वन, So गुड वन। शैतान से मैं so चाहती हूँ डेविल, मैं अपनी सोल का रिश्ता चाहती हूँ सर शैतान से। I think all art forms, कुछ भी ले लीजिए। आई थिंक जिंदगी में एक, आपने मुझसे पूछा कि लोगों को अगर किताब नहीं पसंद हो व्हाट शुड यू डू, माय थिंग इज एक कुछ पसंद होना चाहिए। अदरवाइज लाइफ इज सो ड्राई, आई कांट इमेजिन गोइंग थ्रू लाइफ विद एब्सोल्युटली, यू हैव टू हैव समथिंग। तो चेतन भगत के बारे में आपका क्या विचार है? चेतन भगत, आई थिंक आई फील बैड फॉर हिम बिकॉज हर राइटर से यही सवाल पूछा जाता है। अच्छा, व्हाट It's अबाउट literally- शोभा डे? नहीं, बात तो वही है ना, लाइक अच्छा, लिटरली शोभा डे के he's बारे में नहीं become बोला। the poster child and she was in some sense not with Chetan Bhagat too. I mean, what I like about him, I'll tell you what I like about him, is that he must be a fantastic storyteller. End of the day, he changed reading in India. Which writer can do that? He made reading, आप कह रहे थे लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, he made people read. Ordinary people who said मुझे किताबें नहीं पढ़, मैं 10 साल बाद किताब उठा रहा हूँ, उसने चेतन भगत उठाया, तो कुछ कौन तो था वो होगा, गधा? कुछ तो होगा। कौन था? मुझे मिलना है उससे। I just think कि सबका इट्स लाइक कि there'll be millions who will raise their hand. कि कितने ऐसे बहुत सारे अमेजिंग चीज पढ़ी है और आपको उसमें से डॉग चलो ठीक है, सॉरी। It is, he has, if you're reaching out to people and लोग आपकी कहानी सुन रहे हैं, तो कुछ तो you're doing right. आई थिंक दिस अमीश देवगन इज आल्सो डूइंग गुड जॉब। Yes. Devda Patnaik, he's very good. Amish and my thing is that सबकी अपनी, we tend to analyze stories based on grammar and English and दैट्स नॉनसेंस। है ना, कई कहानियां हैं। बट यार आपका तरीका मुझे ना इतना मतलब इतना पोएटिक है कुछ चीजों में, मतलब आपका तरीका कैसे बताऊं मैं आपको, बहुत I'm ही liking the compliment. हाँ बहुत ही पोएटिक। अरे भाई सच है, मतलब उसमें कॉम्प्लीमेंट को लाइक करना ही पड़ेगा। अब सच बोलूंगा तो कैसे उसमें रहोगे आप। अब ये सितारा के बारे में आपने ये लिखा हुआ है, आई कैन सी द टाइनी स्पेक्स ऑफ डस्ट डांस मेरिली इन द सनशाइन स्पॉट्स and then disappear in the dark. The sun tries to peek through the leaves of the tamarind tree. I lie down beneath it and close my eyes. I don't want to see anymore. The truth is ugly. If only I could just lie like this forever, with bits of sun on my face, insects crawling into my hair, and eyes closed, for sure closed. ये कविता है। कविता नहीं है, लेकिन आप when you were calling it out, it was
pretty fascinating for me because it's quite rare to hear someone else call out from that book. So I have to say thank you first. हाँ, बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल, आपने बहुत अच्छा लिखा है ये वाला। मतलब मैंने आपको अभी जो मैंने नोट्स बना, अच्छा मुझे एक बात बताइए। आपने नोट्स बनाए? हाँ It's हाँ like homework. हाँ हाय हाँ राम, मैं हाँ बार बार कह रही हूँ it's a story book and आप नोट्स बना रहे हैं। हाँ, you get lost in the stories of individuals and suddenly a reminder that the real story is Jal Mahal. That's what my note Yeah. is. हाँ। कि आप कहानियों में, लोगों कहानियों में खो, राइटर आपको उनको बोल रहे नहीं यहाँ पे खो जाओ, यहाँ पे खो जाओ, बट वो रिमाइंडर दे रही बेटा असली कहानी तो जल महल की चल रही है, ये अभी उसमें खोना मत बहुत ज्यादा। सी दिस इज व्हाट आई हैव मेड, यू सी दिस, ये देख रहे हो Oh my God, I have to take a picture of that before I go. आप? बिल्कुल कंप्यूटर तो पाई चार्ट लग रहा है। ये पता है मैंने क्यों बनाया था? हाँ। आपकी कहानी पढ़ते पढ़ते ना मुझे मेरा मेरा बचपन याद आ गया। हम्म। तो मैं अपनी वाइफ को बता रहा था कि मैं किस तरह की चौल में रहता था, हाँ। आगे पीछे क्या था उसके, तो मैं उनको ये दिखा रहा था एक एक करके, क्योंकि पढ़ ही रहा था। हाँ। तो उनको दिखा, ये देखो यहाँ पे ये था, यहाँ पे पेड़ था, यहाँ पे ये था, एक एक करके उनको समझा रहा था बिठा के कि ऐसे ऐसे हम रहते थे। तो फिर मैंने बोला कि इनकी कहानी पढ़ के मुझे अपना बचपन याद आ गया, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हमारे घर बने हुए थे। You know, that's actually such a lovely compliment. हाँ हाँ उसकी मैं फोटो लूंगी जाने से पहले। हाँ हाँ, श्योर श्योर। ये और देखो यहाँ पे मैंने और नोट्स बनाए हैं। नहीं, my point is, you know, जब हम कुछ लिख लेते हैं, हाँ वो हाँ कुछ भी हो, always feel जब उसको दुनिया में we release it into the world, it's gone from our hands, it's gone to someone else. And when it goes to someone else and you see it and interpret it in your own way, literally that is the power of words actually. That's true. And this was such a lovely reminder. अब ये लिखा है मैंने, आई लाइक्ड इन द बुक, क्या लिखा है ये, पता नहीं क्या लिखा है, हाँ, द कैरेक्टराइजेशन ऑफ कैरेक्टर्स, ये लिखा मैंने। व्हाट यू मेंशन अबाउट द पीपल बाइंग दीज किड्स, इज दिस ट्रू? ये सच है या फिर ऐसे ही मेंशन किया आपने? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स जो ये बच्चों तो को, आज भी होता है, वो तो सदियों, मतलब दिस इज सच अ जो बच्चों yes को of खरीदा course बेचा जाता of है, course तो जैसे यहाँ पे आपने इस तरह से लिखा है कि मतलब जैसे होता है कि ये पूरी लाइन दे दो मुझे, उस टाइप के right खरीद फरोख्त हो रही है। जब बंगाल में फैमिन हुआ था हाँ हाँ इन द 1770s के आसपास, एट दैट टाइम जहाँ बहुत गरीबी होती है ना, दैट इज़ द टाइम, इट्स स्ट्रेट आफ्टर दैट व्हेन देयर इज़ फैमिन, व्हेन देयर इज़ डेथ, व्हेन देयर इज़ डिजीज, व्हेन जब कमी होती है, दैट इज़ द टाइम वेयर यू सी exploitation, right? Because you're the most vulnerable. That is also interestingly the time when a lot of women were also, because they had to fend for themselves, many of them lost their husbands uh, to death and disease for various reasons. They also got into the sex trade. तो अगर कैलकाटा का जो रेड लाइट एरिया है near the port and all of that came up in सोनागाछी Sonagachi. सोनागाछी। And a lot of it came up immediately, like there are, if you look at the graph, after the famine as well. पर So कोलकाता में फैमिन तो economics बाद में is, 40s में भी आया था, एक जो हाँ, सबसे there have been खतरनाक many था। waves, of course. So that is the thing, अगर आप ग्राफ देखें ना, तो that is when economics affects culture and it's all intertwined in society and all of it is intertwined in some sense. Essentially आपको नहीं जहाँ लगता want ओवर होता अ है, पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्लॉयटेशन की परिभाषाएं गुम हो जाती हैं कहीं उसी में? अब मैं एक्सप्लॉयटेशन को क्या बताऊं, जैसे मैं एक लड़का हूं, ठीक है, मैं भूखा हूं बहुत दिनों से, somebody wants to have with me and give me some food, is he exploiting me? I don't know, these are all बड़ा मिस, अजीब नहीं हो जाता? मतलब क्या है, these are all individual choices. I think कहाँ तक हम कहाँ तक जाएंगे, किस लेवल तक हम बोलते रहेंगे, वो I समझ think नहीं पाता the मैं। definition is individual. From a group point of view वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, but from an individual point of view it is, there is a very distinct line in all of us to say this is what I'm comfortable with, and after which I'm doing things that I really don't want to do. तो वो individual lines हैं उस पे। स्टैंड अप कॉमेडियन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, आई वेंट एज अ पुअर किड, आई वेंट टू वर्ल्ड्स बिगेस्ट पॉप स्टार्स होम, he fed me nice beautiful dinner, he made me travel in his personal Disneyland, he made me go on he made me see his personal lion,
and in the morning he came and gave me a right? Is that exploitation or a good host? No, I mean, That's it's Michael ridiculous, Jackson. right? Yes, of course, we all know. And again, I mean, these things are, Is that exploitation or that's Michael Jackson? But and look at it. it is, of course, to both. I mean, and it's again, I mean, these are questions that should not be asked and should not be answered. I mean, because it is so obvious. With children, there is absolutely, matlab, इसमें there is no discussion or debate. What is wrong is absolutely wrong. So when पर I'm मैं talking, I'm हमेशा talking as an individual. मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, यूएस की बात छोड़ो, वो जोक था वो वाला, ठीक है. बट इंडिया में अगर फैमिन है, भूखे मर रहे हैं लोग, तो वो क्या होगा? मतलब आई डोंट नो. मतलब मोरली तो एक्सप्लॉयटेशन ही है. मोरली इट इज एक्सप्लॉयटेशन, चाहे वो Yes. कितना भी कोई महान बन जाए The उसमें. thing is, in whether it's war, whether it's famine, whether it's a personal crisis, whether it is a personal tragedy, when you're pushed to an extreme, our lives keep flowing in a certain direction. But when we are pushed to an extreme, there are choices that we make which are out of the ordinary, sometimes justified internally by us, and sometimes we don't forgive ourselves. But usually it is in these extreme situations that life takes those turns. तो आप और मैं बैठ के कैमरा पे, माइक पे, we can keep arguing and taking the moral high ground and low ground and arguing and saying the right things and the wrong things, but what is the point? I mean, these are individual battles that must be fought in some sense. Thank you so much for coming and thank you so much for being जैसे वो शेर है ना कि जैसे है वैसे ही रहना. तो हमने बात करी एकता कुमार जी से. I just had a blast in talking to her. It was beautiful conversation. मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी इतना ही पसंद आएगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करें, बहुत सारे लाइक्स करें. इकोलेस को आप सब्सक्राइब करें, लेकिन हमारा एक और चैनल है इकोलेस फैन पेज. आपको उस पर भी बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे. तो इकोलेस फैन पेज और इकोलेस दोनों को सब्सक्राइब करें, दोनों के वीडियोस लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं. धन्यवाद.